We are awaiting for Mr. Mahadev Sali, the President Printers Association Ichal Karanji. Probably they are on the way. They will reach any time before the lighting of the lamp takes place. We are also awaiting Mr. Sanjay Thorawat, President Kolhapur Jilla Mudrak Sangh. He is also on his way, so probably should reach in some time from now. We also would like to welcome Mr. Umesh Shelar, President Satara Mudrak Sangh, who has come from Satara all the way. Now I request Mr. Prakash Godke, Shri Prakash Godke, Secretary of Pune District Master Printers Association, for the inauguration. And please welcome Mr. Anil Arora, President printpackaging.com and PAMEX organizer in association with All India Federation of Master Printers. So I request you all dignitaries to inaugurate the function by lighting of this lamp. Anybody, those who are smoking, so they can probably let their lighter. Okay, done. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Request dignitaries to please arrange themselves for a good photograph, nice photograph. So thank you very much, all the dignitaries, for being present here. Going forward, I will request everyone to probably raise for a minute or so, just to give us offer a Shraddhanjali to the MLA and a current MLA and the past president, or rather past mayor of the city of Pune, Muktaji Tilak, because she has expired just yesterday. So let us offer her Shraddhanjali by standing raising for 2 minutes, please. Thank you very much.
Thank you very much. Taking this forward, please welcome Dr. Girish Ji Datye, past President Poona Press Owners Association, to welcome the print fraternity travel from all over Maharashtra, sparing their valuable time for attending the roadshow and making it successful while narrating the initiatives taken by Poona Press Owners Association for supporting print fraternity in and around Pune city. Thank you very much. Thank you. नमस्कार. प्रथम सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्सचे प्रेसिडेंट श्री रवींद्र जोशी, SGS ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र दत्ता बरुआ, वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट श्री अनंत जोशी, श्री तुषारजी धोटे, को चेयरमन पामेक्स, श्री शैलेंद्र पोपळे, प्रेसिडेंट डोंबिवली मुद्रक संघ, श्री महादेव साळी, मला असं वाटतं आलेले नाही आहेत अजून, संजय थोरावतही यायचे, कोल्हापूर मुद्रक संघ, श्री प्रकाश गोडके, पुणे डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्रिंटर्स असोसिएशन, श्री अनिल अरोरा साहेब, आणि या टेक्निकल कॉन्फरन्सचे स्पीकर्स, इतर मान्यवर, सगळे डिग्नेटरीज, सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. खरं तर आमच्याकरता म्हणजे PPOA करता हा खूप आनंदाचा क्षण आहे, कारण रजिस्ट्रेशनलाच खूप ओव्हरवॉल्मिंग रिस्पॉन्स मिळाला. 400च्या वर रजिस्ट्रेशन झाली. खरं तर आम्हाला असं वाटलं होतं की हा हॉल आधीच 10 वाजताच भरून जाईल. ठीक आहे, हरकत नाही, लोक लांबनं येत आहेत, थोडा यायला त्यांना वेळ लागेल, पण सगळ्यांचं मी पहिल्यांदा मनपूर्वक स्वागत करतो. खरं तर आम्हाला जी प्रेरणा मिळते ते आमचे प्रेसिडेंट, पहिले आमचे प्रेसिडेंट आहेत आणि मग फेडरेशनचे प्रेसिडेंट आहेत. आज थोडं इंजर्ड असूनही ते आज इथे या कार्यक्रमाला आले, याच्याकरता खरं तर त्यांचं मनपूर्वक मी स्वागत करतो. आम्हाला अशीच प्रेरणा देत राहा. डेडिकेशन म्हणजे खरंच काय असतं ते आमच्या प्रेसिडेंटकडनं शिकावं. त्यांच्याकडनं आम्हाला काम करण्याची प्रेरणा मिळते. त्यामुळे खरं तर आपण थोडं टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. आणि त्यांनी सांगितलं की नाही, वेलकम स्पीच तुला करायचंय, आज्ञा. आणि अशा स्वरूपाचं आम्ही काम करतोय. गेले 14-15 वर्ष आमची टीम इथे काम करते. पुन्हा प्रेस ओनर्स असोसिएशनच्या खूप मोठ्या मोठ्या लोकांनी ती असोसिएशन उभी केली आणि आज आम्ही ती पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतोय. आत्ताच 6 डिसेंबर ला आम्ही मुद्रक मेळावा घेतला होता आणि नेमक्या मुद्रकांच्या असोसिएशन कडनं काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्याचा 1 to 1 आम्ही प्रयत्न केला. लोकांनी खूप चांगल्या पद्धतीत रिस्पॉन्स दिला. त्यांना नेमकं काय हवंय, पण बरेच वेळेला असोसिएशन म्हणजे नेमकं काय आहे, असोसिएशन कडनं अपेक्षा काय आहेत, तर बऱ्याच वेळेला आपण दुसरीकडे किंवा समोर बोट दाखवतो की तुम्ही हे केलं पाहिजेत. पण खरं तर असोसिएशनचा अर्थच हा आहे की आपण हे केलं पाहिजेत आणि त्याच्याकरता मुद्रकांचा सहभाग असल्याशिवाय कुठलाही मोठा कार्यक्रम हा यशस्वी होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक कार्यक्रमामध्ये आम्हाला असा अनुभव येतो की
जेवढा आम्हाला अपेक्षित आहे तेवढा रिस्पॉन्स मिळत नाही. पण आज खरंच खूप आनंदाचा दिवस आहे, की आमची अपेक्षा 200-250 लोकांची होती. 460 लोकांचं रजिस्ट्रेशन झालंय, बरोबर आहे ना? तर ही अपेक्षा आमची पूर्ण करण्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप आभार मानतो. गेले 12-13 वर्ष माननीय रवींद्र जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही संस्थेच्या वतीने टोयो इंक ही शाई अत्यंत कमी दरात मुद्रकांना उपलब्ध करून देत आहोत. पुणे आणि पुण्याच्या बाहेर सुद्धा मुद्रक संघाची लोक आमच्याकडनं ही शाई खरेदी करतात. आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो, की आम्हाला एखादा टन महिना 2 टन असं विकली जाईल शाई, असं वाटत होतं. पण आज आम्ही 8 ते 10 टन महिना शाई विकतो. आणि या सगळ्याचं श्रेय हे आम्हाला नसून हे मुद्रकांना आहे. एकत्र आलेल्याचा परिणाम किती चांगला होऊ शकतो याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. जगात कुठेही अशा स्वरूपाचे एकत्र येऊन शाई खरेदीची घटना घडलेली नाही. आणि मी इतर मुद्रक संघांनाही अशी विनंती करतो, की आमच्याकडनं तुम्ही ही शाई घ्या. कारण ही 25 ते 30% कमी दरात शाई उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर आता आम्ही एक प्रयोग केला. आमची अशी इच्छा आहे, की एकत्र कागद खरेदी करता येईल का? किंवा याबरोबर असं काही करता येईल का, की भांडारातर्फे एखाद्या कागदाची एजन्सी घेता येईल का, की ज्यायोगे आपल्याला कागद स्वस्त दरात मिळू शकेल का? कारण आता कागदाचे वाढलेले दर हा आपण जे काही दर देतो आपल्या ग्राहकाला, त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला आपल्याला हा प्रॉब्लेम येतो, की दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज दर दिला, ते आज रात्री दर वाढले. दुसऱ्या दिवशी 5% वाढले, की आपण आपलं कोटेशन बरं आपल्या समोरचा ग्राहक म्हणतो, की नाही मला त्याच दराने द्या, की मुद्रक हा प्रॉब्लेम मध्ये आलाच म्हणून समजा. तर अशा पद्धतीत आपल्याला जर काही करता आलं, तर ते करणं खूप आवश्यक आहे, गरजेचं आहे. त्याच्याकरता मुद्रकांचा सहभाग असणं याची गरज खूप जास्त आहे. खरं तर आजच्या जे सेमिनार आहे याचं कन्व्हर्जन्स इन प्रिंटिंग असं टायटल आहे. त्याचा अर्थ नितीन वाणी सर तुम्हाला समजून सांगतीलच, पण आमच्या व्हाईस प्रेसिडेंटनी त्याचा एक फार सुंदर अर्थ सांगितला आहे, की नद्या एकत्र येतात, त्याचा संगम होतो. याचाही अर्थ कन्व्हर्जन्स आहे. तर मला असं वाटतं, की आपण एकत्र येण्याची महतीच हे टायटल आपल्याला सांगतंय. त्यामुळे आपण सगळे एकत्र याल, एकत्र सतत येत राहूयात. मागे 2-3 वर्ष आपल्याला कोरोनानी एकत्र येता आलं नाही. आपण ऑनलाईन भेटत होतो, पण ऑफलाईन भेटणं आपल्याला जमलं नाही. आपण सगळे एकत्र आलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी तुमचे आभार मानतो. आता मुळात ही आपण जी कॉन्फरन्स किंवा रोड शो घेतोय, तो आपण पामेक्स करता घेतोय. आपलं भवितव्य काय आहे? कोरोनानी आपलं सगळं जग
Morning, dear printers. I'm very happy to welcome you all to this PAMEX Roadshow. PAMEX is an exposition of graphic and printing technology that is held in Mumbai, and it will be held from 27 to 30th of March on 2023. Uh, it is organized by the All India Federation of Master Printers, which was established in 1953. It is the apex organization of printers in India and comprises of more than 2.5 lakh printers spread all across the country and through more than 80 affiliate associations who are spread across towns and cities all across India. AIFMP, for the purpose of supporting the printing industry, participates in and organizes different national, regional, and international events, and with the purpose of lobbying for the interests of the Indian printers, showcasing the Indian printers' achievements, and holding technical seminars and exhibitions for educating the printers about global trends and upcoming technologies. In this thread, AIFMP organizes a series of seminars called Romancing Print, which is held in Tier 2 and Tier 3 cities, which is aimed at reaching out to the grassroots level printers to educate them about global trends and to tackle technical issues that small printers might not be able to overcome without expert knowledge, which will not have access to unless they're in bigger cities. AFP also organizes the National Awards for Excellence in Printing, which is supported by the Government of India. This is an excellent platform for showcasing your printing skills and innovation, and also to know where you stand in relation with printers across the country. This time, the Global Print Excellence Awards has also been organized, which will allow Indian players to compete with global printers, which will also, give you an opportunity to know where you stand in the global printing arena. I invite all your participation in this. Where banners have been put up across the venue, so please do participate in great numbers. AFMP also maintains a very important tool for printers, which is a CRISIL index, and there are two indexes here. One is Pridex and one is Cardex. Pridex is mainly for commercial printing, and Cardex is for packaging. These indexes track the changes in printing cost, taking into consideration all relevant parameters like paper, consumables, wages, etc., which will help you calculate your cost and also to negotiate with your customers. It is to be noted that these indexes are the only one of their kind in the world. All the information on all these is available at the AFMP website, which is www.afmp.org. So I invite you all to please visit the website and do contact us if any sort of information or any help is required. This time, PAMEX has been held in Bombay with the theme Convergence. This roadshow will aim to give you some idea of what Convergence is about and how it is shaping our printing industry. I hope you will take full opportunity of this full opportunity and go back with a good understanding of this theme. I will be to welcome you all in Mumbai. I hope you enjoyed the day today. Thank you so much. Thank you, Raghvendra Da, for helping us know your Dil Ki Baat and expressing it very flawlessly. Now, ladies and gentlemen, please welcome Sri Ravindra Joshi ji, President, All India Federation of Master Printers, for his speech of the roadshow series Emerging Trends, the Way Forward, planned for the promotion of PAMEX 2023, having a theme of convergence in print from the city of Pune, and his guidance to the print fraternity and printer brothers. Over to you, Ravindra ji. नमस्कार मित्रांनो. सर्वप्रथम आज मी स्वतः खूप सेंटिमेंटल झालोय, कारण ऑल इंडिया फेडरेशनचा अध्यक्ष, पुणे प्रेसचा अध्यक्ष, पामिक्सचा चेअरमन या तीन भूमिकेमधनं तुमच्याशी संवाद साधण्याची संधी आज मिळते आणि खूप दुर्मिळ आहे असं मला वाटतं, की माझ्या आयुष्यातला एक फार मोठा एक संधी आहे, की मी तुमच्याशी अशा पद्धतीने जोडला गेलोय. पुन्हा एकदा
ऑल इंडिया फेडरेशनच्या वतीनं, पुणे प्रेस असोसिएशनच्या वतीनं आणि आमच्या पामेक्स एक्झिबिशनच्या वतीनं तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. अतिशय आनंद आहे की आज ह्या कार्यक्रमाला आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातून केवळ ह्या प्रोग्रामला येण्यासाठी म्हणून आपला वेळ खर्च करून अनेक अडचणींना तोंड देत ट्रॅफिकची, पुण्यातल्या समस्यांची आज तुम्ही इथे पोहोचलेला आहात. त्यामुळे मनस्वी आनंद आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्याचं प्रमुख कारण असं होतं की पामेक्स एक्झिबिशन जे आमचं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्सनी गेले अनेक वर्ष आम्ही भरवतोय. आता एक निश्चित एक ब्रँड तयार झालेला आहे की आज इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा पामेक्स एक्झिबिशन किंवा पामेक्स हा एक ब्रँड आज एस्टॅब्लिश करण्याचं काम ऑल इंडिया फेडरेशननी केलेलं आहे. त्यात निश्चितच आमच्या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, त्याच्याबरोबर प्रिंट पॅकिंग .कॉमचे अनिल अरोरा यांचा फार मोठा सहभाग आहे. आणि या एक्झिबिशनच्या माध्यमातून जी परिवर्तन आपल्या मुद्रण क्षेत्रात गेले अनेक वर्ष, मी म्हणेन की मुद्रणाचा शोध 700 वर्षापूर्वी लागला. त्याच्यानंतरचा 700 वर्षांचा अखंड प्रवास, त्यात झालेले अनेक बदल. मी तर असं म्हणेन की आमची पिढी भाग्यवान आहे, आपली पिढी भाग्यवान आहे की आपण निदान लेटर प्रेस पासनं प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, AI या नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीकडे आपण आता माहिती करून घेण्यात इतपत आपली परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तर मला असं वाटतं की आपली पिढी जास्तीत जास्त म्हणजे भाग्यवान आहे की आपण या सगळ्या ट्रान्समिशन मधनं आपण गेलेलो आहोत, आपण ते जगत आहोत आणि पुढेही आपल्याला आणखी आव्हान आपल्याला पेरायचे. तर ह्या विषयामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी म्हणून आणि पामेक्स हा एक मुद्दामून विषय घेऊन एक एकत्रित असा कार्यक्रम करण्याचं आम्ही आयोजलं होतं. आणि म्हणूनच आमच्या अरोरा साहेबांनी एक ही थीम आम्ही तयार केली की कन्व्हर्जन्स इन प्रिंट. अनेकांनी सांगितलं की नद्यांचा संगम आहे, अमुक आहे, तमुक. आणि खरी गोष्ट आहे की कन्व्हर्जन्स ही एक मला असं वाटतं की 2-3 टेक्नॉलॉजी एकत्र येऊन आपण मुद्रणात त्याचं काय करू शकू, त्याचा कसा उपयोग करू शकू, असा त्याचा अर्थ मी काढलेला आहे. आणि आज त्या विषयामधले तज्ञ आपल्याकडे आलेले आहेत. मला असं वाटतं की पारक फूड्सचे नलवडे साहेब, नंतर की इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सहा मॅडम, बॉक्स कंपनीचे पाटील सर आणि शहा साहेब मुंबईमधून आलेले आहेत. या चौघांनी अतिशय सुंदर कामगिरी ही केलेली आहे या क्षेत्रामध्ये. आणि त्या विषयामध्ये आपल्याला माहिती करून घेण्यासाठी आज ते सगळे इथे उपस्थित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा आपण निश्चित फायदा करून घेऊ. मला असं वाटतं की पुणे असोसिएशनचं काम आता दाते सरांनी आपल्यासमोर मांडलेलं आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्सचं काम माझे सेक्रेटरी भाऊरावांनी मांडलेलं आहे. त्यामुळे जास्त आता मला बोलण्याची गरज नाहीये. 2 गोष्टी मी असं सांगतो तुम्हाला की पुणे असोसिएशनच्या वतीने आमचे 2 प्रोजेक्ट आमच्या समोर आहेत. एक प्रिंटिंग मधलं म्युझियम जे आज जगात प्रत्येक देशामध्ये आहे पण भारतात नाहीये, असं मला वाटतं माझ्या माहितीप्रमाणे. तर पुण्यामध्ये असं एक प्रिंटिंगचं म्युझियम चालू करायचंय. आणि दुसरी गोष्ट प्रिंटिंगचा एक मॉल, प्रिंटिंग मटेरियल मिळण्याचा एक मॉल आम्ही पुण्यात चालू करण्याचा आमचा मानस आहे. सुदैवाने आमच्या पूर्वीच्या सर्व संचालकांनी, कार्यकर्त्यांनी, पुण्यातल्या मुद्रकांनी 1919 पासून जे एक तप समोर ठेवून काम केलंय त्याच्या परिणती म्हणजे आमच्या 2 वास्तू पुण्यामध्ये आहेत. आम्ही भाग्यवान आहोत की आम्हाला 2 वास्तू त्यांनी दिलेल्या आहेत. तर त्या वास्तूचा उपयोग काय करता येईल? तर मला असं वाटतं की मुद्रकांच्या फायद्यासाठी एक प्रिंटिंग मटेरियलचं एक दुकान, एक मोठा मॉल, ज्याला आपण हल्ली मॉल म्हणतो, की कुठलीही गोष्ट लागणारी तुम्हाला त्या मॉलमध्ये अतिशय रिझनेबल दरात आम्ही उपलब्ध करून देऊ शकू. हे 2 प्रोजेक्ट आमचे आहेत. ऑल इंडिया फेडरेशनच्या वतीने सांगाल तर आता आमचा नवीन प्रोजेक्ट म्हणजे AIFMP भवन. मला असं नेहमी वाटायचं की पुण्याच्या असोसिएशनला 2 बिल्डिंग आहेत आणि माझं ऑल इंडियाचं ऑफिस हे अतिशय छोटं आहे किंवा 500 फुटात आमचं ऑफिस आहे. तर आमची अपेक्स बॉडी असताना आमच्या संस्थेचं मोठं ऑफिस असलं पाहिजे, एक स्वतःचं भवन असलं पाहिजे. फॉर्च्युनेटली ती संकल्पना पुण्याच्या आमच्या जीसी मीटिंगमध्ये आम्ही रुजवली त्यावेळेला. आणि एक सुदैवाने आम्ही एक 15,000 स्क्वेअर फुटाचा प्लॉट मणेसरमध्ये घेऊ शकलो. आणि तिथे आता आम्ही या येत्या 2-3 वर्षामध्ये हे AIFMP भवन आम्ही तिथे तयार करणार आहोत. ह्या भवनमध्ये काय असलं पाहिजे, भवन कशासाठी करायचं, ह्याच्यासाठी मी सर्व मुद्रक क्षेत्रातल्या सर्व लोकांना एक आवाहन करतोय, केलेलं आहे आणि तुम्हाला आज तुमच्या उपस्थित करतो की आम्हाला तुमच्याकडनं इनपुट्स पाहिजेत. प्रिंटर भवन AIFMPच्या असोसिएशनकडनं भवन म्हणजे त्या भवनमध्ये आपल्याला काय काय पाहिजे. एक लॅब पाहिजे, एक कन्व्हेन्शन सेंटर पाहिजे, ज्या अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतील. आता आपण म्हणतो की प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, AI, या सगळ्या नवीन ज्या प्रिंटिंग मधल्या ज्या डेव्हलपमेंट्स आहेत, 3D प्रिंटिंग आहे, तर ह्याचं एक कुठेतरी एकत्रितपणे सादरीकरण करणं
किंवा त्याची टेक्नॉलॉजीची लोकांना उपलब्धता करून देण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार असणं, त्यासाठी त्या जागेचा उपयोग आम्हाला करायचा आहे. तर मला असं वाटतं, की तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यातनं ह्या सर्व गोष्टी शक्य आहेत आणि आम्ही त्या निश्चित करू शकू. पुन्हा एकदा सर्वांचं मी स्वागत करतो. मला फारसं काही बोलता येत नाहीये माझ्या तब्येतीमुळे. पण तुम्ही आलात, खूप आनंद झाला. पूर्वी एक मला असं वाटतं, की आपण सगळ्यांनीच मुद्रण क्षेत्रात झालेले बदल बघितलेले आहेत, की पूर्वी मला आठवतंय किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आपण तेलाच्यासाठी बाटल्या घेऊन जायचो, दुधासाठी बाटल्या घेऊन जायचो. पुण्यामध्ये आपल्याला वाणी सामान करून द्यायचं. पण आज त्याच्यातला बदल म्हणजे आपण ज्या गोष्टी खरेदी करतो त्याच्या पॅकेजिंग मधला बदल हा खूप मोठ्या प्रमाणात झालाय. तो आपण सगळ्यांनी आत्मसात केलेला आहे. तसाच प्रिंटिंगमध्येही त्या दृष्टिकोनातनं अनेक गोष्टी आपण नवीन-नवीन इंट्रोड्यूस करत आहोत. त्या सगळ्यांचा फायदा, सगळ्यांचा कशा पद्धतीने आपल्याला परिणाम साधता येईल आणि व्यवसायामध्ये कसे बदल तयार करता येतील, ह्याच्या दृष्टिकोनातून ही कॉन्फरन्स मला सगळ्यांना उपयोगाची पडेल. पूर्वी एक पिक्चर मला बघायचं आठवतंय, जागते रहो. आठवतंय सगळ्यांना? जागते रहो नावाचा एक सिनेमा होता. मला असं वाटतं, की मुद्रकांनी कायमच जागते रहो अशा ती वेळ आलेली आहे. कारण रोज काहीतरी बदलतंय. मी त्यात आणखीन एक गोष्ट ॲड करीन, जागते रहो एंड छापते रहो. थँक यू व्हेरी मच. बाय. Thank you, Sri Ravindra Joshi ji, for your encouraging words and motivating us while outlining the activities of All India Federation of Master Printers. I am sure that the print fraternity in Pune have noted your appeal and to participate in large numbers by sending more and more inquiries more and more entries to NAP awards and contributing more on upcoming AIFMP Bhavan project. With your insightful and exciting thoughts, the print community attending the today's show from all over the Maharashtra will attend the PAMEX 2023 in whooping numbers with a definitive plan to invest into new technologies while leading the convergence in print. Moving forward, I request Tushar Dhoteji, co-chairman of PAMEX AFIMP, to briefly introduce PAMEX and activities planned around the PAMEX 2023, making it a must-visit exhibition. As you all know, PAMEX is India's leading and premier exhibition being organized in Mumbai between 27th and 30th of March 2023. So kindly please note down the dates where
सुन सकते हैं? With the permission of the panel, I'll start from here and then I'll join all of you. Pawandeep ji, just we would like to take a chota sa break. We would like to invite this Mr. Umesh Shelar, President Satara. He was there on the dais. Oh. Mahadev Sadi ji, Ichalkaranji, President Ichalkaranji, to come on the dais and receive the felicitation from Poona Press Owners Association. So they've come all the way with bus filled with 50 odd people. So see their dedication. They've come all the travel all the way from Ichalkaranji to Pune. They've started early in the morning at about 5 o'clock and reached here, but because of some due to traffic congestion here in Pune, they got delayed. And we are also sorry to keep rest of them waiting, kind of thing. So sorry. Thorwat Sahib, Sanjay Thorwat Sahib, please come on the stage to receive a felicitation from Pune Press Owners Association, President of Kolhapur Printers Association. They have also traveled, some 8-9 of them, they have traveled all over from Kolhapur. So thank you very much for coming over, sir, and gracing this occasion. Thank you very much. Pawandeep ji, you can take over, please. Thank you. Check. सुन सकते हैं? Yeah, I think this is clear. First of all, thank you to all of you, AI, FPM and PAMEX, for allowing me to moderate this panel. मेरे ख्याल से मॉडरेट करने से ज़्यादा मैं इतना एक्साइटेड हूँ इन लोगों से सीखने के लिए। 50 क्वेश्चन तो मेरे पास ही हैं। तो आज लंच लेट मिलने वाला है, मैं पहले बोल रहा हूँ। कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा आज। शुरू करने के लिए आप सबने पीटर ड्रकर का नाम सुना होगा, मैनेजमेंट गुरु हैं। उन्होंने एक बात कही थी, कामयाबी और कामयाबी को हासिल करने के तरीके ये बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस के अंदर सिर्फ नॉलेज रहती है। मैं आज सबसे गुजारिश करूंगा, एक जोरदार ताली अपने लिए मारिए जो आप उठ के यहां आए हैं नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि पैसा, कस्टमर, एम्प्लॉय, मार्केट का रेट, ये सब हमारे बिजनेस के बाहर। हमको सिर्फ अपनी नॉलेज का पैसा मिलता है, सक्सेस उसी का मिलता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग टाइम आया हुआ है। आज की डेट में हिंदुस्तान में सस्टेनेबिलिटी, ये माइक नहीं ठीक है। Is this no? Can you hear me still? No. यहाँ नहीं टिकेगा नहीं ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम। हमारे को कस्टमाइजेशन चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, आइडियाज चाहिए। D2C ब्रांड्स ने लेगेसी ब्रांड्स को मार्केट में आके चैलेंज कर दिया है, और वो चैलेंज पूरे करने के लिए ये सारे के सारे लोग प्रिंटर्स की देख रहे हैं। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी एक प्रिंटर को ये जानना है कि किस टाइम पे क्या ऑफर करना चाहिए और क्या नहीं ऑफर करना चाहिए। और आज का जो पैनल है ये इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाला है। सबसे पहले मैं पैमेक्स और AIFPM की तरफ से इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस टाइम पे इससे रेलेवेंट और कोई दूसरा टॉपिक प्रिंटिंग में है ही नहीं। कुछ ही समय में आप देखेंगे इस पैनल में कि इन लोगों ने प्रिंटिंग की भाषा ही बदल दी है। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग अपने आप को प्रिंटर भी नहीं कहते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंटिंग का जो आज मकसद है, जो प्रिंटिंग एक अपने कस्टमर को अचीव करने के लिए मदद करती है, वो सब बदल चुका है। मैं खुद पेपर और पेन लेके बैठा हूं। मेरी आप लोगों सबसे गुजारिश होगी, आप भी पेपर और पेन उठाइए और नोट्स बनाने शुरू कीजिए, क्योंकि हम इस पैनल से आज वो सब पूछने वाले हैं जो शायद किसी को भी नहीं बताते। ये शुरू करने से पहले आज पहले बात करते हैं कन्वर्जेंस है क्या चीज। कन्वर्जेंस क्या हमारी जिंदगी में आ चुका है या आने वाला है? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी सबकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन पहले सिर्फ एक ग्रीन और रेड बटन होता था, कॉल आती है तो उठाइए, नहीं उठाना है तो लाल बटन दबाइए। आज हम इससे पेमेंट करते हैं, इस पे कंटेंट देखते हैं, इससे दूर कहीं भी वीडियो कॉल कर लेते हैं,
और न जाने हम लोग इससे क्या-क्या करते हैं। ये कन्वर्जेंस है। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं एक गठबंधन है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का और यही गठबंधन अब प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी आ चुका है। कैसे? आप सबके पास स आप में से कितने लोग खुद प्रिंटर हैं? वाओ! तो आप सबके पास या तो प्री-प्रेस के लोग होंगे या खुद का प्री-प्रेस डिपार्टमेंट होगा। आपको पता होगा प्री-प्रेस डिपार्टमेंट में भी कन्वर्जेंस आ चुका है, जहाँ पहले ऑफसेट और फ्लेक्सो और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के अलग-अलग प्री-प्रेस सॉफ्टवेयर लगते थे, प्री-प्रेस प्रोसेस लगते थे, अब सब एक से ही हो जाता है। मैं खुद प्रिंटिंग मशीनें बेचता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे आगे, हम डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ एक ही मशीन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बॉब्स मशीन ऐसी बेचता है जिसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी हम एक ही मशीन में इंटीग्रेट करके आपको दे सकते हैं ताकि आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकें। सो मशीनों पे आ चुका है। हम फिनिशिंग की बात करें या कनेक्टेड पैकेजिंग की बात करें, आज एक लेबल नहीं है, आज एक कार्टन नहीं है, एक कस्टमर से बात करने का ज़रिया बन चुका है, जिसके बारे में हम कीटोनिक से भी बात करेंगे। और फाइनली आज एक पैक, एक ब्रांड की फिलॉसफी का भी एक ज़रिया बन चुका है। आज कस्टमर जानना चाहता है, क्या आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? और इसके बारे में हम विनय सर से बात करेंगे। सो प्रिंटिंग और कन्वर्जेंस ये आ चुका है। इसमें कोई दो राहें नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है, इन 4 सवालों का जवाब आपको लेके जाना है। पहला सवाल, आपको किस दिशा में जाना है? आप करना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ अपने आप को एक लेबल प्रिंटर, कार्टन प्रिंटर, पीओपी प्रिंटर, कैलेंडर प्रिंटर कहना चाहते हैं? आप किस दिशा में जाना है? ये सबसे पहला सवाल है जिसका आपको जवाब तैयार रखना है। नंबर दो नंबर 2 वहाँ जाने के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी को सीखना ज़रूरी है? क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। घर बैठ के कन्वर्जेंस नहीं होएगी। तो बाहर जाके किस टाइप की टेक्नोलॉजी को सीखना ज़रूरी है? नंबर 3 डायस पे बैठे लोगों की कौन-कौन सी सीक्रेट के ऊपर ध्यान देना है, ताकि वो हम खुद भी सीख सकें। और नंबर 4 पैमेक्स की तैयारी। सर मैं आपसे गुज़ारिश है, आप प्लीज़ होटल पार्टनर हम सबको दीजिए। होटल नहीं मिल रहे हैं उस टाइम पे। मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो पैमेक्स की तैयारी शुरू कीजिए बिकॉज़ हम सबको वहाँ जाना है। आज के 3 जो ऊपर वाले प्रश्न हैं, उनका आंसर हमें वहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसके साथ हम पैनल डिस्कशन शुरू करते हैं। डायस पे बैठे चारों पैनलिस्ट के बारे में आप सब जान चुके हैं। तो मैं अब एक-एक करके सबसे सवाल पूछना शुरू करूँगा अबाउट कन्वर्जेंस इन प्रिंट। मेरा पहला सवाल आप चारों से है। एक-एक करके सर आपसे शुरू करते हैं। Can you briefly elaborate on changes observed in print and packaging scenario during pandemic and post-pandemic conditions, and how do you see the industry in 2023? We can go from here or we can start from there. आय थिंक पॅन्डेमिक जेव्हा सुरुवात झाली, सगळ्यांना माहिती असेल, की इनिशियली वॉज अ टफ टाईम, की मी काय करू शकतो, कसं करू शकतो, काय होईल, हे किती दिवस चालेल. पण जसं पॅन्डेमिक सुरू झालं, आय थिंक सगळ्यात मोठी जे चेंज झाला इज डिमांड इन पॅकेजिंग. आणि त्याचं रिझन आहे, की वन इज येस डेफिनेटली, की अवेअरनेस. लोकांना हायजीन बद्दल जो अवेअरनेस नव्हता, तो इतका वाढला, की लोकं प्रत्येक गोष्ट म्हणायला लागले, की मला पॅक करून पाहिजे. सो त्या दरम्यान पॅकेजिंग बद्दल डिमांड सडनली वाढली. दुसरा इम्पॅक्ट आला ई-कॉमर्स. म्हणजे सगळं काही आपण ऑनलाईन ऑर्डर करायला सुरुवात केली. त्याच्यामुळे पॅकेजिंग डिमांड परत वाढली. कारण ई-कॉमर्समध्ये म्हणजे तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन ऑर्डर करता, हॅज टू डिलिव्हर पॅक. कुठल्याही लूज गोष्ट तुम्ही डिलिव्हर करू शकत नाही. त्यामुळे आय विल से इनिशियल फेज ऑफ पॅन्डेमिक पॅकेजिंग डिमांड ग्रू व्हेरी फास्ट. सडन सगळीकडेच म्हणजे आय थिंक तुम्हाला प्रिंटर लोकांना सगळ्यांना माहिती असेल, की तुमचे कस्टमर तुमच्या डोक्यावर बसले होते, की काय जेवढं बनलं 10 बॉक्सेस बनले, 10 बॉक्सेस दे मला आत्ता. ही सिच्युएशन होती. पण आय थिंक जसं-जसं पॅन्डेमिक स्टेबल होत गेलं, ह्या डिमांड स्टेबल होत गेल्या. आय विल से रादर टुडे आज बघाल तर काही सेक्टरमध्ये डिमांड थोडीशी कमी पण झालेली आहे. पर्टिक्युलरली फार्मास्युटिकल सेक्टर, याच्यामध्ये डिमांड थोडीशी आजच्या डेटला कमी आहे. पण आय विल से गोइंग फॉरवर्ड 23 मध्ये वी सी दॅट की अगर
टचवूड की हे कोरोनाचं परत काही नवीन काही येऊ नये. मी हे करतो, हे करतो की येऊ नये म्हणून. पण झालं नाही तर ही जी डिमांड आहे, जी आता आहे, इट विल रिमेन सस्टेन अँड इट विल ग्रो. Namaste to everyone. So, regarding the pandemic, he has said like a lot of things like what we have faced. I don't want to get it into that. I'm good. Yeah. So, pandemic was a tough time, of course, for everyone, and everyone has bleed out in that time. So, I would like to say about the pandemic. People have started thinking. Actually, people have started thinking in a different directions because people got the time. Because we printer never had a time to think about anything. Only just running around the job, after the job, running around the people in the organization. But then this was a good time which every printer or everyone has got to rethink. And after thinking, the entire scenario changed. Scenario change as in like a lot of jobs, like new jobs, people have started looking into it. People have started seeing printing in a different directions. Regular printing was little bit on a side track, and the new things, value additions, like learning of the more and more substrates is people have started thinking. And of course we also did that, and got a lot of learning during that time. And in 23, and we are looking to convert and get the entire journey of our print industry to happen in a good direction. And I'm seeing a very good growth in 23. हाय, नमस्कार. मी दोन्हीमध्ये बोलतो, मराठी आणि इंग्लिश. For my notes. For your notes in Marathi. Yeah, of course. Before pandemic and during pandemic, the first phase of pandemic was easy for packaging industry, print and packaging industry. More of demand. People stocked things at that places, and later on they started consuming it, of course, online, as Mr. Viraj Sorin said and Mr. Patil said. Those points are very correct. But second phase of COVID, I would say, was a little bit tough for printers, I'm sure. प्रत्येकाने स्टॉक केल्यानंतर ते यूज नाही झालं आणि मग तुमच्या सेल्समध्ये ड्रॉप झाला. And that affected the balance sheets and other things. Everybody faced the same challenge. Going forward for 2023, I think second phase of COVID was a little bit of a carteling from many people, from all the raw material people. I think it was more of carteling, which they tried to earn what they lost in the first phase of COVID. Yeah, it was a big way people faced, and the brunt was faced by small time people. Yeah, I mean the small and mid level people. Sad to say that, but during COVID and post COVID, many of the small units had to shut down. They were not able to sustain it. So that's a bad thing. People who were good enough to sustain, they made it for themselves. Now, post the second phase, 2022, we are looking at 2023. If the corona resurge or the Russia war impact on the exports market and the global market do not take a front seat, I think we look for the best year to come, 2023. It's already been showing. And if those things do not come, I think it will be a good year ahead for all. The polymer industry, सगळ्यांना माहित आहे, इंक, पॉलिमर, पॉलिएस्टर, सगळ्यांचे रेट्स मागच्या वर्षी खूप वाढलेले होते आणि त्यामुळे सगळ्यांना इम्पॅक्ट खूप मोठा पडलेला होता. तोच मला वाटतं रिव्हर्स होणार आहे. सो नाव 2 थिंग्स यू कॅन डू, आय वुड से, तुमच्या माणसांना जपा, इन्क्रीज देअर नॉलेज, माणसांना जपा आणि त्याचं परिवर्तन तुमच्या बॅलन्स शीट्स वरती आणा. ॲज अ प्रिंटर्स, आय वुड से दॅट इज इम्पॉर्टंट. See for something innovative, see for something which is with the rules and regulations. As you said, sustainability, 2025 is a target for most of the countries, including India,
to have sustainable products. And it is very, very difficult. आम्ही लोक 4 वर्ष काम करतोय for getting in sustainable products. A simple thing, today, like you said, milk bottles, so we do like Tetra Pak. If Tetra Pak is costing you 5 rupees a pack in packaging, we do it something at around 1 rupee and give the same kind of shelf life. So you get pouches now, which has all the barriers. Do not refrigerate the milk, and you can store it for 90 days, 180 days. Yeah. So that is what will come. And we got award with Amul. I mean, Amul. Today we supply to all the big dairies in India. The small dairies are coming up. It's a complete circle. Reduced energy, reduced transportation, storage, reduced leakages. Sada manus, the end user, the people, the person who gives it to the shopkeeper, he faces a brunt when there are leakages and spoilages. With this technology, those all are gone. Yeah. And then printing on a good machine, getting the best polymers, getting the best things becomes like a conversion, And who is the beneficial? It's the end user. Yeah. So post pandemic, it's an interesting year, 2023. But if you innovate, if you be with your partners, be with your supplier partners, and be with your customers. That's another convergence we were talking about. Convergence in print is not only print and technology. I would say the supplier as well as the customer. The customer is the most difficult in India. They do not look upon technology, they look upon cost. आणि आपण लोक सगळे कॉस्ट मध्ये अडकलो जातो. We face the cost brunt. So I would say it's a nice year ahead. Let's hope it goes well. Thank you. Interesting. Thank you, sir. The question is very good because one most significant change after pandemic, post pandemic, as Sachin sir told, it's e-commerce. Rather than go outside, people buying online. So online का जमाना है. ऑनलाइन का जमाना है तो ब्रांडिंग तो बनना है. ब्रांडिंग बनना है तो स्मार्ट पैकेजिंग है. स्मार्ट पैकेजिंग है तो रिक्वायरमेंट है. उसके साथ ये देखना है कि हम स्मार्ट पैकेजिंग कैसे करें और स्मार्ट बिजनेस कैसे करें. दिस इज द लिंकेजेस ऑफ द पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग एंड द ब्रांडिंग एंड सेलिंग. बिकॉज पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल सी द बॉक्स देखा जाता है, उसका बाहर का एक्सटीरियर अपीयरेंस जो है उसका वो देखा जाता है. उसके साथ हम कुछ प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे देते हैं. जैसे कि वैक्सीन हम ट्रैवल करते हैं तो वैक्सीन का टेम्परेचर देखना पड़ता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल द वैक्सीन फ्रॉम रिमोट प्लेसेस एंड गिव द वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग. स्टोरेज में आ जाता है तो उसका टेम्परेचर कैसे मॉनिटर करें. तो पैकेजिंग में ही हम टेम्परेचर सेंसर इनबिल्ट करते हैं तो रिमोटली वी कैन मॉनिटर कि उसका टेम्परेचर हम जो भी रिकमेंड करते हैं वो हो रहा है क्या. बिकॉज दिस इज द वेरी मच नीड ना. अभी वो है हमारे रिक्वायरमेंट में ही आ जाता है. उसके साथ अभी ब्रांडिंग का तो मैंने बात किया है. आईटीसी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि उनका एक सिगरेट का हाई एंड प्रोडक्ट था. तो हमने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किए हैं बिकॉज वी ऑलरेडी साइन है एनडीए, तो हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते. लेकिन आईटीसी के लिए हमने किया था कि ब्रांडिंग कैसे करते हैं हाई एंड प्रोडक्ट के लिए. तो ये ब्रांडिंग के लिए हम लाइटिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ कुछ अलग भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि हेल्थ केयर में हमने देखा कि टेम्परेचर है, उसके साथ क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं. अलग अलग हम अदर टेक्नोलॉजीज एक साथ यूज करके हम कुछ अलग ही प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर सकते हैं. हमारा यूनिक ब्रांडिंग भी हो सकता है. तो ऑनलाइन में और ब्रांडिंग में हाई एंड प्रोडक्ट में हम ये सब चीजें इंक्लूड करके हम प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक अलग ही मैं आपके पास आऊंगा दोबारा प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके. हाँ, सारी बातें अभी मत बताइए. आप लोगों में से कितने लोगों ने पैंडेमिक के टाइम पे कुछ नया प्रोडक्ट, सोल्यूशन, प्रोसेस कुछ डेवलप किया? जरा हाथ खड़े करेंगे.
सीक्रेट नंबर 1, पैंडेमिक के टाइम पे डायस पे बैठे सारे प्रिंटर्स ने अपना काम करने का तरीका, प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस इनोवेट करें हैं। इस चीज को प्लीज नोट कीजिए। ये टाइम यूज किया गया था टू डेवलप समथिंग न्यू, कंफर्ट जोन से बाहर आके। और इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल ये है, फॉर द प्रिंटर्स ओनली, आप तीनों के लिए ये है, एंड आई कम टू यू लिटिल लेटर। हमें बताइए कि आपको कब, कौन से मोमेंट्स या क्या आपको बिजनेस में दिखता है जब आप ये कहते हैं अपनी टीम को या खुद से, अब कुछ नया करने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू पिवट, इट्स टाइम टू चेंज। ऐसे क्या आप 2-3 चीजें देखते हैं जब आपको ये लगता है? विनय सर, मैं आपसे शुरू करूंगा, देन आई गो टू सोरेन एंड दीपा, देन दीपा मैम। See, I would say, first of all, the world is competitive. Yeah. Today, let's have we put a Omet machine on our floor. Somebody will see it and he will also put into. Money is available. Banks give loans if you are okay to pass that. What is important is, I think, understanding where you are going. Yeah, where you are going, how you are going. It is not that ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. It's not that. You have to be thorough in whatever you want to go. Analyze the market, analyze your strength. That's why I said Mansanna Zapa. That means keep your people. Whether your people are capable of taking that lead into making it successful. You get the best of the machine, you put in money, you get best automation, Bobs, Omet, whatever. But if your people are not functioning, or if your people are not able to take that lead, it is difficult. True. Yeah. So I would say people, in order to sustain the competitiveness, and process control, yeah, in order to make your product cheaper in-house. And then of course the innovation R&D on the material side is there, which goes hand in hand. And with that, if the customer comes in, like I always like आमचं प्लांट होता तो फक्त एक 2 कोटी टर्नओव्हर होता एक 15 वर्षापूर्वी आणि एक 15 कोटीचा लॉस होता. ओके. And the challenge was to get 1 rupee cash profit. The challenge was 1 रुपये cash profit कमवायचा. That's what Mr. Parak, the chairman of our group, said. So I said, fine. What is the way you can do it? The first thing was, whatever machines you have, use it to the fullest. Point number 1. Full utilization of your machines in your plant. Yeah. Point number 2, get in partnerships at 3 levels. Partnerships at the supply level, partnerships in-house of the people. Make sure there is no politics at any level. Yeah. Very harmful for any industry. Everybody should work together. And the third is partnership with the customers. So today you will be surprised, we do a turnover of 500 crores and we have only 2 or 3 people in marketing. It's all on partnerships. Yeah. No people in marketing, no going across to the customers. Customers comes to us and we then make sure that this is a product. We start with that, understand everything, and then go for it. So involvement of people, involvement of technology, involvement of experts, yeah, is the way forward, I would say. Soren. So we call Viraj Prints as a thinker organization. We think a lot, and my entire team also think a lot. And we have, I would say, a कीड़ा है हम लोगों में कि like every 10 years, like वो एक कीड़ा आता है कि नहीं अब time हो गया industry change करने का. So we keep that into the mind, and also like it motivates when you do little bit of a changes in your current work. So it motivates you to go every day for a work कि नहीं चलो आज तो कुछ नया करना है हम लोग को जाके.
So that is always there in the mind, and we keep on doing and go into that direction. We keep on diversifying the products, diversify the things. I'll give you the example. What happened some years back, when everyone knows about it as a digital industry. I'm talking about the music and the audio, music and audio and film publicity in that genre. Like, we work for almost for a decade, and we were doing very specialized packaging, specialized work. सीडी होती है खाली 5 इंच की, और उसके अंदर ही उसके ही आजू बाजू हम लोगों को इनोवेटिव थिंग्स करनी रहती है, एंड वी वर सक्सेस इन डूइंग दैट. Created few of the patented packaging also, which was exported internationally. And then time came in, all of the sudden we started realizing it. Okay, now the digital have started growing very fast, like internet has started coming in, mobile phones have started coming in, smartphones have started coming in. तो अभी क्या करेंगे हम लोग? So then slowly we started thinking कि like let's think into a different direction and let's change the. ये printers लोग को बहुत बड़ा advantage है, I would say, कि हम easily industry change कर सकते हैं, लेकिन और कोई industry में easily changes नहीं होता. Big round of applause for that. Yes. So I would say, like audio video people, like distributors, they don't have any work today. They probably must have shut down, or they must have retired at the early age. But then printer की तो कोई retirement age ही नहीं है, if you see in a different direction and if you visualize that way. So the entire thing, and we looking for the other industry, another partners, another areas, and we started grooming ourselves. So I would also like tell like all the printer, like, see the things, see in a right direction, diversify karo time to time, and I'm sure like you'll have a good success. Wow. दीपा मैम, नया कुछ करने का समय आ गया है. When does Keytronics think about this? यस, नया तो होना ही है, बिकॉज अभी पोस्ट पैंडेमिक के बाद सब कुछ स्मार्ट हो गया है. बच्चों के हाथ में तो मोबाइल फोन आ गया, स्मार्टफोन, सब कुछ ऑनलाइन है. तो स्मार्ट, मैंने पहले ही बोला है कि स्मार्ट थिंग आ गई है, तो स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट पैकेजिंग है, स्मार्ट लीफलेट भी हम दे सकते हैं, तो उसके साथ भी कुछ अलग कर सकते हैं. थोड़ा सा कन्वेंशनल थिंग से हम सोचे कि कुछ अलग कर सकते हैं क्या, कुछ भी अलग कर सकते हैं. हमारे स्टॉल पे आप जाके देखिए कि ये लैंप है, एलईडी से भी है, कुछ भी है. उसके साथ हम आईओटी भी कर सकते हैं. आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एआई का ज़माना है. हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पर भी किसी के साथ भी लगा सकते हैं, तो वो तो हो जाएगा. लेकिन प्रिंटर को ट्रेडिशनल प्रिंटिंग के साथ कुछ स्मार्ट थिंग भी सोचना चाहिए कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. तो स्मार्ट थिंग्स तो Nice. होनी ही है. उसके साथ जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि सबके साथ सबका सबका विकास. विकास. तो सबका विकास भी होना है, सबके साथ भी होना है. तो उसके लिए मैन भी चाहिए, वैसे ही मशीन्स भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, सब कुछ उसके साथ चाहिए, तभी तो वो कन्वर्जेंस हो सकता है ना. प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नथिंग बट द कन्वर्जेंस ऑफ द, ये सबके साथ हम काम करते हैं, तभी तो कन्वर्जेंस हो सकता है. अभी क्या होता है कि पैकेजिंग में हम कुछ अलग सोचते हैं, तो डेफिनेटली पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उसका क्वांटिटी क्या होगा, प्राइस क्या होगा. जैसे सर ने भी बताया कि पहले हम सोचते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है. कुछ अलग देना है तो कुछ अलग तो प्राइस देना ही पड़ेगा ना. कस्टमर को कुछ सोचना तो चाहिए अलग, लेकिन प्राइस इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को, कस्टमर को अफोर्ड ही ना हो सके. तो उसके साथ ये सोच के हमें आगे जाना है, सबके साथ आगे जाना है, सबको मिलके ये काम करना है. सिर्फ कीट्रॉनिक्स ने प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप किया है, लेकिन उसको प्रमोशन तो मिलना चाहिए ना. कुछ पैकेजिंग के हमारे इंडस्ट्रीज को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये भी हमारे पैकेजिंग के साथ हो सकता है, कुछ अलग सोच के अलग हो सकता है. थैंक यू, थैंक यू. आप में से कितने लोगों ने 10 साल पहले जो काम कर रहे थे अब वो नहीं करते हैं, कुछ नया करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे. तुषार जी, 2. मेरी गुजारिश रहेगी, ये जितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं इनसे मिलिए इस पैनल के बाद. हर 10 साल में दे आर चेंजिंग व्हाट दे ऑफर. सर ने बताया टेट्रा पैक को टक्कर देने में इंडिया से कंपनी खड़ी हुई है, आपके शहर से कंपनी खड़ी हुई है. मैं इससे ज्यादा और नहीं इंप्लीमेंट कर सकता कि क्या एक्साइटिंग टाइम आया इंडिया का प्रिंटिंग के लिए. सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन हमारे दिमाग का है. राइट. कमिंग टू यू सर,
मेरे को 100% यकीन है कि अभी ये सब लोग सोच रहे होंगे, मैं भी सोचता हूँ कि कुछ नया करने का वक्त तो आ गया है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? सो उस केस में Bob's, which is one of the biggest and the most respected players in the market, how do you go about educating your customers about what to consider, what kind of projects they can put, whether they should put everything in the new plant, go step by step? What is your methodology of educating the printers who are wanting to invest in new technologies? Uh, yeah, I will say, if you ask me the new projects coming or shifting of the people after pandemic, we observed a lot. It was happening earlier also, but it was more like commercial printer going into packaging, shifting into packaging, or packaging printer shifting into commercial. But after pandemic, we also observed that even non-allied industry peoples are trying to come into packaging. एक्चुअली हम पैकेजिंग वालों के लिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि स्टिल देयर इज अ गुड ग्रोथ इन दिस पैकेजिंग. तो अभी जब ये लोग आते हैं तो आई विल से बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज बॉब्स इज देयर फॉर मोर देन 130 years in the industry, so we have a solutions in flexible packaging, we have solutions in corrugated packaging, we have solutions for cardboard packaging, we have solutions for label packagings. तो इसमें जब आते हैं तो एज अ बीइंग leaders in this industry, we have major available, all sectorial data are available. That means coming to us, we can tell you on your area which is the sector which is active in your region. To cater that sector, आपको कौन से टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लगेगी, कौन से टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या सेटअप होना चाहिए आपका, आपके पास क्या क्या यूटिलिटीज होने चाहिए एडिशनल एडवांटेज देने के लिए. सो एज वी कैन, I will say more or less by using our experience, we can give you almost 360-degree inputs how to set up a new unit and make it functional. सर आपका स्टैंड है यहाँ पे? सर लगवाइए, क्या कर रहे हैं आप? पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है सर इधर. अब मैं इंडिविजुअली तीनों प्रिंटर्स के साथ उनका I will try to ask them something very specific so that we all understand how they see their own particular industry or their own company. विनय सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है. फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों इकट्ठे आ रहा है. अपॉर्चुनिटी ये है कि हिंदुस्तान की फूड इंडस्ट्री थैंक्स टू पैंडेमिक पैकेजिंग की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपने बोला 2025 में इंडिया का टारगेट है टू बी अ सस्टेनेबल पैकेजिंग कंट्री. एक तरफ डिमांड और एक तरफ देने को सोल्यूशन नहीं. How Parak Agro as a company is adapting itself to this new fast changing world? Yeah. So it's a good question, very tough one to answer, actually. Every industry will have competition, that's for sure. Yeah, I mean, today we don't know somebody is coming up. I mean, you'll have somebody coming up very next 2 months' time. First of all, I would say we should analyze ourselves. Khud ka atma parikshan, whatever we call, we should do ourselves. Yeah. Second, we should make sure that the technology is what we have. We make the best use of it. Number two, what Mr. Patil said, 360-degree view है. तो experts को लेके understand कहाँ पे जा सकते हैं. And as Mr. Shah said, कीड़ा है. So every time keep on innovating that कीड़ा. Yeah. See, ये सब एक बाजू में है कि अपन टीम है, बॉसेस है, पैसा है, सब कुछ है. बट एक चीज अपन हमेशा नहीं देखते हैं कि in short, out of 100%, how much is the raw material percentages for if anybody I have to ask, how much is RM cost in 100%? It's somewhere between 65-70 in any process. Yeah. And how much is the manufacturing
cost put together is around 20-25%. तो आदमी के पास कितना बचता है? 5%. Yeah. और कंपटीशन है तो you have to reduce your cost in order to fill your machines. Yeah. So what is remaining is, where do you get that money from? I will give you an example. This is 1 year back, one of the worst period we faced. पॉलीमर जो 100 रुपए होता था वो 150 रुपए हो गया. कस्टमर सिर्फ 25 रुपीज दिया. तो 25 रुपीज कहाँ से आए? Obviously every industry went, the top lines have grown tremendous. The top lines have grown like 30%, 40%. But ये 25 रुपए कहाँ से आए? And that's where I say, any industry, any printer, आदमी को पढ़ाओ, process control को change करो, be associated with, see, all are small and mid-level and printers in this room. Yeah. One thing I realized is, we were also small when we started. Okay. Sure. I came from very big company, but I took the charge of a very small company to make it big. Correct. Yeah. So what we realized is that your tie-up with mid-level and top-level companies in order to learn something from them. They say, I'll tell you one thing, that we in Pune do packaging for, you go to UK, go to any store except Walkers. Every other chips packaging, we have 150 designs, which we sell every month, 300 tons going from Pune to UK. Wow. Yeah. Wow. It is there throughout. Continuous change of designs. We manufacture it, sustainable, goes to UK. Yeah. Wow. But ये करते वक्त सबसे important क्या है कि तुम्हारा प्रोसेस कंट्रोल कैसा है. ये 5% जो भी मार्जिन है वो आप ऑर्डर लेने के लिए गंवा देते हैं, तो आप 0-0 पे आ जाते हैं. या तो बाकी का 5 आपको शॉप फ्लोर से ही मिलेगा. If you don't have your shop floor right, that whatever convergence you do, whether you do it supplier end, print end, or the customer end, if your shop floor is not right, and that's something which one should learn from companies, Indian good companies. You have Marico as one example, very nice company. They have made their shop floor systems very good. Then MNCs, you have PNGs and Johnson and other people. उनके साथ एक बार टाइप हो जाए किसी का भी प्रोडक्ट में, आई मीन इवन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन इन आई थिंक इन योर इंडस्ट्री, top guys would teach your people systematic approach. अगर systematic approach है तो बहुत कुछ है, and that is what we also implement. It is difficult to have systematic approach in an Indian scenario. Shop floor बहुत अलग चीज है. ओनर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स इन्वॉल्वमेंट जितना कम हो और जितना सिस्टमैटिक अप्रोच हो उतना ही प्रोग्रेस ज्यादा हो. आई वुड से दैट. या ओनर्स शुड नॉट ऑलवेज लुक एज ओनर्स, नहीं तो तुम्हारा कंपनी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा लेकिन स्केलिंग नहीं करेगा. गेट इन मोर फ्रेश ब्लड. दैट्स व्हाट you have to do. Teach them, have a combination of experience which has बहुत से लोग हेरिडिटी में जाते हैं, मतलब पिताजी का है बिजनेस, आगे बढ़ा है, एक लेवल पुढे जातात. We should see how we have fresh blood coming in. You have someone to manage the fresh blood and the experience and then scale up. Yeah, that's what I think I would say. Going forward, one has to see. मेरे ख्याल से मैं पहला एक पैनलिस्ट होऊंगा. तुषार सर जो क्वेश्चंस पूछने ज्यादा उधर से क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन वहां ज्यादा जा रहे हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन आप सबको ये है. सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली. आप में से कितने लोगों के पास टेक्नोलॉजी मेंटर्स हैं, एक्सटर्नल मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? प्लीज ये पॉइंट नोट कीजिए. जरूरी नहीं है कि हमारे को सब कुछ गूगल या इंटरनेट से ही सीखना है. You can find people who can be your mentors and they are willing to help.
प्रॉब्लम सिर्फ ये है हम लोग पूछना ही नहीं जा रहे हैं. सो प्लीज फील फ्री. ये 4 बैठे जो हैं इनकी गारंटी तो मैं ले रहा हूं, बट आई एम श्योर आप पैमेक्स पे आएंगे, आप और हमारे रोड शोज अटेंड करेंगे, आपको पता चलेगा दैट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर विलिंग टू पार्ट नॉलेज. आपको सिर्फ सीखने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए. मैम मैं पहले आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज आपने स्मार्ट पैकेजिंग की बात करी. प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम में ही कन्वर्जेंस है. ये कभी किसी ने सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी छपना शुरू हो जाएंगे, अपनी भाषा में बात करें तो. सो और आपने ऑलरेडी स्मार्ट पैकेजिंग के बारे में काफी हमसे बात करी कि आज की डेट में ये जो पैक का रोल है वो उसके अंदर के कंटेंट्स बचाने से ज्यादा कस्टमर को एंगेज करने में भी ज्यादा एक मार्केटिंग का पार्ट बन गया है रादर देन जस्ट एज अ प्रोटेक्टर. मेरे हिसाब से कि आगे जाके ये स्मार्ट पैकेजिंग जो है ये हर पैक ही स्मार्ट होने वाला है. तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज. कि हर पैक स्मार्ट पैक. हर पैक स्मार्ट पैक होगा. हम्म. अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया था स्मार्ट पैकेजिंग फॉर टैबलेट्स करके, और टैबलेट्स के लिए. ओके. तो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं और कुछ क्रिटिकल इलनेस रहता है कि जो एल्डर्स के लिए वो टाइम पे लेना पड़ता है, जो भी टैबलेट्स है मेडिसिन है वो. तो कभी कभी वो भूल भी जाते हैं ड्यू टू द एज, और कभी कभी वो लेना ही नहीं चाहते. तो कैसे पता चले कि इन्होंने ये मेडिसिन टाइम पे लिया है नहीं लिया है? बिकॉज एवरी टाइम देयर विल बी नो वन इन द होम, और डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता है. तो स्मार्ट पैकेजिंग टैबलेट के लिए कैसे किया जाता है कि टैबलेट के ऊपर ही सेंसर्स प्रिंट करते हैं. प्रिंटिंग, प्रिंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. नाम में ही प्रिंटिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स है. सब कुछ फंक्शनल इंक के साथ ही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं. तो जैसे ही हम एक टैबलेट निकालते हैं तो उसका सेंसर ब्रेक हो जाता है, ब्लूटूथ के साथ वो कनेक्शन होके डॉक्टर को भी पता चलता है कि इतने बजे ये मेडिसिन लिया है. घर को जो भी है रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको भी पता चलता है लिया है करके. ये जब हम एक, दिस इज द वन एग्जांपल. हम प्रिंट करके स्किन भी हम चिपका सकते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे कि रियल टाइम में हम एल्डर्स को मॉनिटर कर सके कि क्या उसका टेम्परेचर कितना है, बीपी कितना है, शुगर लेवल कितना है. ये सब सेंसर हम बॉडी को लगा सकते हैं और रिमोटली मॉनिटर डॉक्टर भी कर सकते हैं. और रियल टाइम डेटा मिलता है कि 9 बजे कितना है, 10 बजे कितना है. जितना भी हम टाइम दे देते हैं उसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं. वाओ. तो एवरीथिंग इज द स्मार्ट. पैकेजिंग के प्रिंटिंग के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं. टैबलेट्स, इनोवेशन इन टैबलेट पैकेजिंग, इसका फ्यूचर 1.4 बिलियन की आबादी हमारी, हम सब बीमार पड़ने वाले हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि 75% हिंदुस्तान में डेथ्स होने वाली है सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज के कारण. लाइफस्टाइल मतलब हमारा खाना पीना जो गलत होता जा रहा है उसकी वजह से, ये हमारा रहन सहन का तरीका. मेरे ख्याल से अगर एक की टेक अवे मैम की बात से समझ में आया तो ये है कि स्मार्ट पैकेजिंग फॉर मेडिसिन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग, इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिग. Sorry, this one is a tough one. Now, the biggest challenge we face as owners of print companies is that we limit ourselves in market approach. यहाँ पे हम legacy businesses की बात कर रहे हैं and you are talking about changing yourself every 10 years. 10 years तो हमें लग जाते हैं अपने बच्चे को बचाने में. So how does Viraj Print evolve its identity to become a multi-product, multi-process printer, winning so many awards, catering to so many diverse needs of brand owners? What were the key historic moments you remember which made the company that you are today? Well, as I said earlier, like we are the thinkers. So पूरा दिन बोलते हैं सपने में भी प्रिंटिंग घूमता रहता है. तो when you keep on thinking, lot of thing comes, you know, बहुत सारी चीजें जम्बल्ड हो जाती है माइंड के अंदर कि क्या करना है, लेकिन कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है. देन वी डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड द पाथ फ्रॉम इट. तो हम लोग वे फॉरवर्ड में ऐसा है कि हम लोग उस पे सोचते हैं अलग अलग, जैसे सबस्ट्रेट्स के ऊपर, इंक्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं. वी गो विद ओपन आई, वी जस्ट डोंट गो लाइक विद के भाई हमको लेना है. कंज्यूमर मार्केट तो है नहीं, भिंडी बाजार तो है नहीं कि भाई जाया सब्जी ले लिया आ गया. तो वी गो, वी स्टडी दी टेक्नोलॉजी, वी स्टडी दी एरिया.
और फिर धीरे धीरे करके उसको कंपाइल करके फिर बाद में हम लोग सोल्यूशंस पे आते हैं. व्हेन ऑफ कोर्स वी हैव टू सी आवर आरओआई आल्सो. ऐसा नहीं होता कि भाई हमने आरओआई कैलकुलेट नहीं किया और खाली टेक्नोलॉजी लेके आ गए. Okay. So we calculate that even, and then slowly we come on a decision. All ये सब decisions में लग जाता है time. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लगता है. आज हम लोग ने 5 साल से कोई expansion नहीं किया. Again we are thinking on it, and we once we think, then we do it, and when we do it, we see to it that we are been able to sell that product. ऐसा नहीं है कि भाई शोरूम में आके लगा दिया टेक्नोलॉजी को and people are happy, मैगजीन में फोटो छप गए, हो गया. So ultimately that doesn't work. So the complete ecosystem of the technology what you go has to go into the right direction. And I'll give you the example जो हमने creations में जो fusing करते हैं, like how you fuse the product. Like I'll give you one example. हमने नेस्ले का पैरासाइट बनाया था. पैरासाइट मतलब जिसमें प्रोडक्ट को स्टैक करते हैं लोग जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तभी. तो फॉर दैट वी गॉट एन अवार्ड ऑल्सो, द बेस्ट इनोवेशन प्रिंटर ऑफ द ईयर का. तो वहाँ पे हम लोगों ने सोलर को, इंडोर लाइट सोर्स को लिया, सोलर पैनल्स ली, पूरा पैकेजिंग हम पूरा नॉट पैकेजिंग, डिस्प्ले यूनिट पूरा हमने पेपर बोर्ड का बनाया. पेपर बोर्ड इज वेरी रिजिड वेयर द लाइफ इज लाइक 2 years. We made a chemistry of the paper in such a way like the life of the because it was serving the demand of the customer को चाहिए था वैसा कि भाई हमारे को 2 साल चाहिए जीटी के एनवायरनमेंट में. तो वो हम लोगों ने किया, and then the whole exercise went very well. We presented into the award ceremony. We got an award not only for from the association print week, but we also got an award from the customer, which is a real award. Yes. So that's how the whole journey of the conversion happens. आपने एक लाइन नोटिस करी होगी, विराज ने सबसे पहली लाइन क्या बोली? हम प्रिंटर नहीं है, हम थिंकर हैं. हम सोते जागते ही प्रिंटिंग सोच रहे होते हैं. यही बात मैं आपसे कर रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को प्रिंटर नहीं गिनते. मैं कल विराज के साथ ही आया था पुणे से, अपना मुंबई से, और एक बात उन्होंने और बोली जो ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि विराज प्रिंट सर एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग सस्टेनेबिलिटी 10 to 15 years from today. Viraj Green Initiatives was launched 10 years back on sustainability. जब हमारे में कोई मतलब नाले में सॉल्वेंट जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे, he was thinking about sustainability. So I would say a big round of applause to his company for that aspect as well. चलिए सर, ये तो बात हो गई, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई. अब मुझे ये बताइए कि ये हर चीज, इनिशिएटिव्स, आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आसान तो नहीं है. इन सब में चैलेंजेस बहुत हैं. So please, if you can, take 2 minutes each and tell us briefly about some of the challenges that you faced while launching or introducing something new with a short case study. अगर कोई स्टोरी, कोई केस स्टडी दिमाग में आती हो कि एक चीज करनी थी और वो इतनी डिफिकल्ट थी, फाइनेंस नहीं हो पाया या मार्केट की कंडीशन बदल गई, कुछ लॉन्च करना चाहते थे, कस्टमर ने मना कर दिया, कोई ऐसी कोई any one of you can start, but any challenges that you faced while introducing new, while thinking of convergence and something was adding as a blockage. चलिए आप स्टार्ट कीजिए. हम तो, आपको सबको पता है कि हम प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं. Correct. लेकिन ऐसे नहीं है कि हमें इतना आसान है ये काम करना, क्योंकि अल्टीमेटली द फंड्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस केस, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर बिजनेस, इट इज असाइड न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. तो हो जाता है. तो उस केस में हमें फंड्स कैसे मिलते हैं? तो हमारे राजेश सर जो है, तो उन्होंने बोला है कि आप फंड्स की चिंता मत करो, जो भी नया कुछ सीखना है, कुछ डेवलप करना है, तो उन्होंने कुछ अलग फंड हमें अलॉट करके रखा है कि कुछ डेवलप करो जो फ्यूचर बिजनेस के लिए भी वो यूज कर सकते हैं. कभी बिजनेस हम टारगेट करते हैं कि 5 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या, तो वो हम पहले ही यहाँ पे साइड में हम उसका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो प्रोडक्ट हम एक लेवल तक ले जाते हैं. हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था, ये आईआईटी पवे के साथ हमने काम किया था. इंटरनेशनल एक गिटारिस्ट है रॉबिन सुप्रोसो, उसको एक नेचुरल वो ड्रम रहता है ऑर्केस्ट्रा में, 8 ड्रम्स रहते हैं. इट इज नॉट इजी टू कैरी द ड्रम्स इन द
एयरलाइंस नॉट अलाउड एवरी टाइम बिकॉज देयर नॉर्म्स के अंडर वो नहीं आता है, तो उनको ऐसे लगा कि इतना बड़ा क्यों हम लेके जाएंगे, इतने ये ड्रम लो, वो 8, तो उन्होंने एक स्मार्ट मीन्स अकोस्टिक गिटार उन्होंने किया है, उसमें वो पूरे ड्रम के साउंड आ जाते हैं। तो उसमें क्या अलग है, प्रिंटिंग के साथ क्या किया है हमने, तो उसमें फोर्स सेंसिंग इंक हमने यूज की है, जो गिटार में हमने प्रिंट की है। जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं, जैसे सर मैंने आपको बोला था उस टाइम गिटार भी दिखाया था कि हम प्रेशर कम ज्यादा करते हैं तो उसके साथ वो साउंड लेवल भी अलग अलग आ जाता है। आगे का इलेक्ट्रॉनिक्स IIT पवई ने किया था, तो वो इतना फेमस उनका ऑर्केस्ट्रा हो गया। अभी आप अकोस्टिक गिटार भी यूट्यूब में ब्राउज करोगे तो कीट्रॉनिक्स के साथ उनका पूरा आ जाएगा वो। तो उस केस में हमें बहुत दिक्कत हो गई थी कि फोर्स सेंसिंग इंक वो इतने टॉलरेंस के साथ है, टेक्निकल वर्ड्स है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए टॉलरेंस में वो आना चाहिए, तभी तो डिजायर्ड साउंड आ जाएगा। 1 साल सर हमें उसको 1 लगा, साल? 1 साल लगा वाओ! सर। हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे जाते हैं क्योंकि उसमें इंक रहती है, मैन रहता है, मटेरियल रहता है, मशीन रहता है, पूरा वैलिडेशन रहता है, तभी तो हम आगे ले जाएँगे ना। सोचने वाली बात ये है कि एक प्रिंटर एक म्यूजिशियन को अपना म्यूजिक कंटिन्यू करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल से दिस डेफिनेटली 1 साल लगा दिया। सर गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का हमें अवार्ड था उसके लिए। वाओ! वाओ! ग्रेट। सर, एनी चैलेंज दैट यू लाइक टू शेयर अ स्टोरी? स्टोरीज तो बहुत है, लेकिन सी हमारा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, वैल्यू बहुत है। एक कंटेनर बाहर जाता है तो 50 लाख रुपए रहता है। सो वट एवर गोज आउट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज परफेक्ट इन क्वालिटी। तो मेरे ख्याल से मैं अभी तक उसके ऊपर नहीं आया हूँ, बट training and development is something as a big challenge, I would say. People training and development, knowledge, education. There may be people here from the education fraternity. Printers में थोड़ा सा इंडिया में वो कमी है, I would say. Printers का knowledge level का. We try from the owners or from the partners like the machine manufacturers and all. We try to educate them, but then the education level and then sustaining that education to make it happen on a regular basis. क्योंकि क्या होता है, ओनर असल्यामुळे आपल्याला शेवटपर्यंत सायकल कंप्लीट व्हायला पाहिजे. ऑर्डर घेतल्यानंतर ऑर्डरचा कन्वर्ट करून पैसे जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला यू आर नॉट इन गुड्स, यू कॅनॉट स्लीप वेल. And then when you're talking about a big amounts, I would say the making of it is the biggest challenge. Make it properly, make it, keep simple. मैं थोड़ा सा सिंपलिसिटी में जाता हूँ, मैं आदमी बहुत सिंपल हूँ, ओके. जितना सिंपल रखो उतना बेनिफिट्स अच्छा मिलोगे. आप जितना उसको कॉम्प्लिकेट करोगे, एक ना एक तार छूट जाएगी एंड यू विल बी इनटू ट्रबल. या आपका इसका गिटार का तार टूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा. सो आई वुड से फॉर मी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोइंग फॉरवर्ड आल्सो many years, that's the biggest challenge, I would say, in India. Not only in India, I would say globally. For a packaging company, plastic print and packaging companies, training and development I would rate as the biggest challenge going ahead. Wow. Sorry. Yeah, as he said is correct. Like trading and educating with the new technology, it's a very very big challenge because we've been always been getting a new technology in India, and since 10 to 12 years now, we were the people as a company. Viraj Prince has been always getting a first time in India machine. So when we got an HUE machine, that was also first time in India, and now we also have a Calopsia digital embossed machine that is also first time in India. So when the machine comes to the India, the challenges are very 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 high because even the engineers of the company, they are also learning on the same machine because India के अंदर तो उन लोग के लिए नया machine है. Overseas से भी आते हैं. I had an experience like even the engineer had come from the Malaysia and India, and they were like just experimenting on the machine, and then it took almost
I remember it had taken around 3 to 4 months to settle that problems. So it comes with a lot of challenges, and that is because of the lack of knowledge. And since they only don't have knowledge, so they are not being able to pass on to the owner of the machines, like us. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंजेस हो जाती है जब भी हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी और नई मशीन्स लेके आ जाते हैं तभी। उसके बाद हो जाता है कि वर्कर्स को ट्रेन करो, तो वर्कर्स को ट्रेन करो तो उसमें भी समय चला जाता है काफी आपका। सो इट टेक्स रियली रियली लॉट ऑफ टाइम, एंड ये सब प्रोसेस देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट आप 1 साल तो यही कर रहे हो नई टेक्नोलॉजी लेके आने के बाद। उसके बाद आप डिमांड क्रिएट करते हो, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओ तो एक्सपेक्ट करोगे कि डिमांड क्रिएट, तो वो कस्टमर को एजुकेशन करो, ये सब करो, और उसके अंदर दूसरे आपके 6-8 महीने 9 महीने, जब आपका पहला कन्वर्जन आता है तो 2 साल हो जाता है। So I would say that's the reason I said you calculate or finance, and in such a way that all these points are also need to be calculated when you actually invest in the technology. And all these challenges will definitely come. You cannot bypass all these challenges. So this also needs to be calculated, and and these are like some of the challenges which we face. And of course, when as a printer, सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी आती है तो कलर मैनेजमेंट्स की इशू होती है, बिकॉज जो नए सबस्ट्रेट्स पे काम करना रहता है सब होता है, तो आपको लिटरली एक लैब क्रिएट करना पड़ता है आपके यहाँ पे, तो उसको आपको कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द न्यू टेक्नोलॉजी, कि भाई कस्टमर को पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू गेट, क्योंकि हम वहां पे जाके जो उसमें जो टाइम लॉस हो जाता है, वी नेवर कैलकुलेट दैट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So these are all challenges according to me. अब मेरे ऑडियंस से 2 और सवाल। कितने लोगों के पास एक फंड क्रिएट किया हुआ है अपनी कंपनी में which is only to be used for new technology and development? दूसरा सवाल, आसपास देखिए, एक हाथ नहीं खड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, कितने लोगों के पास एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम है अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए? एक कहावत है, मेरी नहीं है, मैंने भी पढ़ी है कहीं पे। एक सवाल पूछा गया सर कि सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सब हवा की बात है, आदमी को ट्रेन करो वो भाग जाता है। तो सामने वाले ने दूसरा सवाल पूछा, नहीं ट्रेन करोगे और रुक गया तो? So ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड फंड्स फॉर न्यू इनिशिएटिव्स, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो खुद चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, आसान नहीं है। और ये फंड कोई 2 करोड़ रुपए का फंड होना जरूरी नहीं है, ये 20,000 रुपए का फंड भी हो सकता है। ये 50,000 रुपए की वो टिकट और वो होटल का खर्चा भी हो सकता है जो आप पैमेक्स के लिए करेंगे। लेकिन ये खर्चा, ये फंड तैयार कीजिए, बिकॉज प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो 2020 से पहले की थी वो अब नहीं, हम अपने सामने देख रहे हैं। सर टेट्रा पैक को चैलेंज कर रहे हैं, मैम आर्टिस्ट को हेल्प कर रही हैं, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इन टैबलेट्स। ही इज वर्किंग विद द टॉप डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंट्री टू लॉन्च द वॉलपेपर्स। विजन क्या है कि दीवारों को बदल देना है। ये सब आसान नहीं है, ये बड़ी बातें हैं, लेकिन इसके लिए छोटे छोटे स्टेप तो आज ही लेने पड़ेंगे ना। और इन्हीं छोटे स्टेप के साथ सर मेरा क्वेश्चन आपके साथ है, हमने बात करी फंड्स, ट्रेनिंग, राइट, एंड लैब्स की। सो एज अ बॉब्स, एज अ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर, do you help customers in building project reports and making funds available? Second is, do you provide manpower training for your machines? And third is, what are the additional supports that Bob's has created for the Indian printers? But I think being a leader as you in the industry, that point comes back again. जो आपने पूछा था कि how much amount I reserve for my research and development. And I think in this industry, one of the companies, Bob's, who reserves 7% of turnover, not profit. 7% of turnover amount is reserved only for only research and development. And that's why you see when we come out with the solutions, they are always the path breaking solutions. I can tell you in machine, as you say, हम अंडर इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं। आई विल से 20 साल पहले, जस्ट टू टेक एग्जांपल, इन फोल्डर ग्लूअर्स, व्हेन आई जॉइन बॉब्स,
We have 84 different models for different industries. 84 different. So you have to choose which industry I'm going to work, and depending upon you have to select the model. But today we have only 3 models. So all this has been put into one machine, and now the machines has been made more modular for the industry, so that Convergence convergence. at its best. You don't have to invest everything on day one, Yes. because day one you don't know where on which path you are going to go ahead. So invest on the basics, start your company, start your earnings, then see where you want to go after down the line 1 year or 2 year, and keep adding the features on the machines. And that is what we do, one of the things on the machine parts. Coming back to the project reports, helping the companies to establish, presenting with the bank, yes, we do, because we have lots of sectorial data with us, which industry is doing well, how the packagings are doing. We have various reports we get not only from India, we are getting the reports from worldwide markets. So we can help you to prepare a report which you can submit to your bank, how the industry is growing. We can also help you in financing. We have a type with like Axis Bank, Tata Capital, Siemens, who will give you asset-based financing. So no collateral required, because that is one of the always challenge in Indian banking system, that every banks ask for the collateral. How much collateral you will create? If you have that much collateral, rather you would have been invested on your own. Right. So better. So we have the type, because it's, as I say, when you select the technology, for the at least for the first phase of your built up, you choose the best technology available in the market, because that will give you support in terms of manpower, process knowledge, how to go ahead in the industry and everything. So we will help you in that. In terms of manpower training, we have two kind of things we do. One is on-site training, that is once we install the machine, we will have a special process engineers who will come to your factory, and that is a 1 year program, not a that I install the machine, I Wow. install the Yeah. machine and forget. No, initially yes, it will be a 10-15 days program. Then after every 2 months or 3 months, my process engineer will visit without even asking, and we will give you, I will always ask my customer, you keep a notebook on the machine, your operator has to write there what are the challenges he faced during the running, so that once we come back, because it's a human tendency, after 1 month you forget what problem I faced, because human has a very short memory. So we keep the notes, we do that one. That is why first phase. Second phase, for this industry, for last almost 10 years, we are running school for operator training. That is a 3 months residential course in Pune. So operators are trained hands-on in theoretical as well as practical, because in our industry we have one more challenge. Most of our operators are uneducated. Yep. They are becoming from helper to operator. Chal raha hai. But now want to change. So we take the guys from say 12th pass or ITI guys. We train them technically. So that means the operator is not capable only to run the machine, but also to maintain the machine, and also to improvise the machine, because then he comes with the ideas of different ways to do the same job, how he can do the more and more faster. So that is the help what we can do on this one. And third question what we have asked, Additional support. Any additional? additional support. As I said, being in this industry for so long, we have lots of process knowledge, lots of industry knowledge with us. For example, in folding carton, is all business is about structures, how the box looks. And when you get our machines, you get a book along with that machine which contains more than 500 to 600 different structures what you can produce on the machine. Wow. That is one. Aside that, this is today the industry is of presentation. So everyone want a different structure to be presented in the shelf, so that his box gets selected while when the buyer want to buy. So they always comes with a different design. Customer comes with their crazy demands and all these things.
So we have a dedicated team in Pune who only works on these structure developments. That means you come with your design and we will help you to industrialize that. So that is another supports, and definitely with the help of today's this magazines and everything, we keep promoting the companies, like where we done the installation, how the company has been done. That is the I will say indirect marketing promotion also we will give you in that one. Thank you so much. मेरे ख्याल से he deserves a big round of applause. So much of investment already done for the future of Indian packaging industry. My last question to all four of you, starting from you, ma'am. One piece of advice you would like to give to the audience while they're thinking convergence. कन्वर्जेंस के लिए अभी हमने हमारे यहाँ पे व्हाट वी डू वी हैव अ स्क्रीन प्रिंटिंग यूनिट but traditionally we print polyester and color matching and everything, but when we think to go for a printed electronics, then definitely the functioning come up, but the operator are the same, no? वो तो वही है, उनको तो वही आता है नॉन फंक्शनलिंग प्रिंट करना, तो वो फंक्शनलिंग प्रिंट करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। तो फंक्शनलिंग उन्होंने प्रिंट किया, लेकिन वो टेस्ट कैसे करेंगे कि हमने जो प्रिंट किया वो डिजायर्ड रिजल्ट आया नहीं आया? तो हमारे जो इंजीनियर्स रहते हैं उनको हमने प्रिंटर के साथ माइग्रेट किया। माइग्रेशन मीन्स क्या किया कि इंजीनियर्स को भी प्रिंटिंग आना चाहिए और प्रिंटर को भी इंजीनियरिंग का थोड़ा नॉलेज आना चाहिए। उनको पहले ऐसे लगा कि हम तो ऑपरेटर है, हमें मल्टीमीटर हाथ में लेके कैसे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, लेकिन नहीं वो करते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने इंजीनियर्स को फॉलो किया है। 4 बार इंजीनियर ने चेक किया, कुछ काम आया, वो चला गया, ऑपरेटर बोलता है काम नहीं रुकना चाहिए, वो हाथ में लेके वो चेक किया। तो इंजीनियर्स को भी प्रिंटिंग आना चाहिए ना। वो क्या होता है कि फंक्शनलिंग प्रिंट करते समय उसको कुछ टेक्निकल नॉलेज रहता है, तो स्क्रीन कैसे होना चाहिए, उसका स्पीड मशीन का कितना होना चाहिए, ये वो उस इंजीनियर को पता रहता है। जब तक वो वहाँ पे नहीं जाता है और माइग्रेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं आने वाले। तो हमने ऐसे माइग्रेशन करके हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं सर। So printer became an engineer and engineer became a printer. Sir, one piece of advice from you. I think better to see the PDCA cycle. Yeah, you plan it properly, do it So properly. please tell them what is PDCA so that everybody. Yeah, plan, do, check, analyze. Yes. Yeah, do it that way. But as you rightly said, I think प्रिंटर को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर को प्रिंटर बनना ये जरूरी है, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा दूसरा ये रहेगा कि सिंपल रखो चीजें, कॉम्प्लिकेट मत करो। एक बार कुछ भी हाथ में लिया और वो सस्टेन करने की कैपेसिटी निकल जाती है तो दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, पैसे की बात रहती है, and then you end up into taking so many shortcuts that you end up into big time losses. Yeah, this is what I have learned in many years, that follow the best practices, like Mr. Patil said. Yeah, आपके दो पार्टनर्स को अच्छी तरह रखो, एक मशीन को अच्छी तरह रखो और दूसरा आपका लोगों को अच्छी तरह रखो। या मशीन को अच्छी तरह रखना मतलब उसका ध्यान रखो, spend money on maintaining the machine, which the printers in India do not do. I can blindly say we do not do. अपन पैसे कट करने का कोशिश करते, करो मत। जितना मशीन का ख्याल अच्छा रखोगे, spend money, get the experts timely, 2 महीने में 3 महीने में एक बार visit करो। I think Mr. Patil said it is free, so which is nice. Yeah, and then keep your machines good, healthy, keep your people happy, लोगों को अच्छा पगार दे दो, आपका पैसा दुगना या 10 times बन जाएगा, ये गारंटी है। Wow. Soren. I would like to say, like, with the print industry, don't call yourself as a printer, call yourself as a designer. So you are like how Manish Malhotra is a fashion designer of his industry. He's not calling him as a tailor. So that way you also call yourself as a designer of the print and think differently and be passionate. I would like to say, and think out of the box things. Thanks.
I think suggestion. I have two different things. One for the people who are already in the industry. As I said, as Nalode sir said, कि it is important to understand कि आप क्या करते हो और क्या खर्चे में करते हो. क्या करते हो बहुत लोगों को पता होता है, बट क्या खर्चे में कर रहे हो ये बहुत कम लोगों को पता होता है. सो अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड कि एवरी मशीन इन योर कंपनी हैज अ पर आवर कॉस्ट. Understand that, and then you will understand कि how to earn on that one. एक मशीन पे मैं सर ने बोला था कि मशीन हैज टू रन विथ फुल कैपेसिटी. क्यों बोलते हैं लोग? इसीलिए क्योंकि वो आप चलाओ या नहीं चलाओ वो खर्चा होता रहता है. वो आपको अर्न करना है चलाने से ही. और दूसरा परफेक्टली मेंटेनिंग मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बोलता हूँ कुछ वेरी सिंपल एग्जांपल एक देता हूं आपको. मशीन में कुछ सेटिंग करने के लिए हैंडल होता है, सिंपल हैंडल होता है प्लास्टिक का, मे बी मार्केट में 400-500 रुपए का मिलता है. बट जब वो हैंडल टूट जाता है ना, वो वहां पे एलन की या बोल्ट लगा देता है, बिकॉज वो 5 रुपए में आता है. So you, how many you say? I say because 395 rupees I saved of my company, for me everything. Owner खुश, everyone is खुश. बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि जब वो सेटिंग करने जाता है उसको उसको वो स्पैनर लगता है, एलन की लगता है, एंड सबको पता है कि 90% टाइम पे वो जगह पे नहीं होती, टूल्स जगह पे नहीं होते हैं मशीन पे. सो यू स्पेंड इट मोर आवर्स फॉर दैट वन, मोर टाइम. बट नाउ इफ यू कैलकुलेट दैट टाइम, आप ठीक है एक चेंज ओवर के लिए कैलकुलेट करोगे तो पता नहीं चलेगा क्या है. बट अगर आप सिर्फ महीने भर के चेंज ओवर कैलकुलेट करोगे और साल भर का कैलकुलेट करोगे तो यू अंडरस्टैंड कि वो 350-400 रुपए बचाने के लिए मैंने मे बी 50-60 हजार रुपए खर्चा कर दिए. So understand that logic whenever you maintain the machine. Don't think short term savings. इमरजेंसी के लिए लगा दिया, चला दिया, जुगाड़ हो गया, ठीक है, बट मेक इट बैक टू ओरिजिनल. बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में करने के लिए. एंड द नेक्स्ट सजेशन फॉर द पीपल आर गोइंग, मतलब जो नया सेटअप लगा रहे हैं, बहुत बार होता है कि सेटअप में आपको पता है कि एक मशीन से काम नहीं चलता है. यू विल हैव ए सीरीज ऑफ 7 to 8 मशीन्स. माय ओनली सजेशन, always balance the capacity from end to end process. कोई भी मशीन आपके इसमें बिकॉज मेरा नेक्स्ट प्रोसेस नहीं चल रहा है या अटका हुआ है या फुल चल रहा है, इसके लिए मेरे पहले वाला मशीन बंद नहीं होना चाहिए. वी ऑलवेज से इन द स्टेप ऑफ लैडर, फर्स्ट प्रोसेस से 10% ज्यादा सेकंड कैपेसिटी होना चाहिए सेकंड मशीन का, उससे आगे 10% आगे का. ऑलवेज कीप नेक्स्ट मशीन विथ 10% हायर कैपेसिटी. दैट विल यू लुक कि आगे भी मुझे बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, बट इन रनिंग टाइम you will earn a lot on that one, because spare capacity in today's market is like a gold. बिकॉज प्रिंटिंग इंडस्ट्री में सबको पता है, सबको पता है कि कोई भी कस्टमर दिन में एक तो कस्टमर ऐसा उठ के आता है, बोलता है मुझे आज के आज चाहिए. सो नेवर ब्लॉक योर कैपेसिटी 100%. I always say moment you reach 70 to 75% capacity, start planning for the expansion. That's all. Thank you. Time for questions. नहीं तो मैं सवाल पूछने वाला हूँ फिर से. So I think there is no question as such. There is one question. There's one question here. Can you just introduce yourself also, sir? Just one. So you supply gluing systems. Gluing Okay. system and inspection system. So Understood. most of these packaging companies, they are our buyers. Okay. So what's your question? My question is this: Mr. Sachin told that they give one book with 500 different design to their customer. Whether that book is open for others as well, or like me, so that we can understand and we can also give suggestion who is not having right now, or
I will say, see, with this book, particularly because it is Bob's experience, it is for the customers who invest for that kind of technology. If I start spreading that into the market, definitely knowledge is a different part, but unnecessary competition will start in the market. So we prefer it to keep it with technology so that the right people get the right price for that one. Hope everyone will agree with that one. Well said. Very well said. So you had a question. Uh, my question is to Vinay sir and Sorenji. Is it working? Can you hear me? Yeah. You know, we have been talking about sustainability. So now what happens for a very small printer who's maybe running 2 or 3 units, 5 units? How does he get into this? I believe you are the best people to tell us about this because many people will be thinking about this because the future is you have to be sustainable, you have to be environment friendly. So if you just shed some light on this. So regarding the sustainability, uh, we would consider it in the medium size of the printer, not a larger size of the printer. And for no doubt, it's a difficult task to get into the sustainable program. But then somewhere you have to start the initiative. You can start with the small phases, like you divide that into 4 to 5 phases of the sustainability, because the sustainability program is like around the 15 golden rules of the world. So one golden rule has like one depth to it. So it would be better like you divide that into a phase and try to give a task like 45%, 50%, 60% side, and then you can have an 98, 95% penetration for the sustainability. And people basically for the sustainability program, this go eco-friendly, go green, एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा आलस है. सबसे पहले तो वो आलस निकालना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट. यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो योर टाइम, योर मनी, fees for all different organization. When we talk about FSC, SGS, then intratech audits, all these you have to invest the time also equivalent, and then you have to see the consistency how you follow. And तो ये सब करना तो ज़रूरी है. अगर ये धीरे-धीरे करोगे और ये ओवरनाइट नहीं होगा. इट विल टेक अ टाइम. इट विल टेक अराउंड गुड 5 to 6 years, 7 years to do it. We had a question there. Yes. Now you have a mic. Okay. माय नेम इज तीर्थराज जोशी. सचिन सर, तुम्हाला क्वेश्चन असा आहे की आज चांगली गोष्ट आहे की कॉलेजमधल्या पण आपल्याकडे लोक आलेली आहेत. तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे बॉब्स कंपनी ट्रेनिंग देते 3 महिन्याकरता लोकांना. त्यात आफ्टर 12th आणि ITI लोक घेतात. IT काय म्हणतात ते. तर आपल्या कॉलेजबरोबर कोलॅबोरेशन करून विथ द असोसिएशन हेल्प तुम्ही असं जर काही डिप्लोमा प्रिंटिंगच्या लोकांना, डिग्री लोकांना जर एज्युकेशन दिलं तर आम्हाला ज्या काय ओनर्स लोकांना आता जो प्रॉब्लेम, तो लेबर प्रॉब्लेम, तो येणार नाही. तर तुमच्याकडे असं काही शेड्यूल आहे का की तुम्ही डिप्लोमा किंवा डिग्रीच्या लोकांना घेऊन हे सगळं करू शकाल? आय थिंक तुम्हाला माहिती आहे सुनील खोडकेंशी तुम्ही टचमध्ये असाल तर सुनील खोडके जे आहे ते ट्रेनिंग सेंटरचे इन्चार्ज आहेत. त्यांच्याकडे डिपेंडिंग अपॉन जशी मशीन्स अवेलेबिलिटी येते त्याप्रमाणे ते शेड्यूल डिक्लेअर करत असतात वेगवेगळ्या ह्याला. पण फक्त ओनली थिंग आहे की मी जेव्हा बॅच घेतो ना, ती पर बॅच पर मशीन इज ओनली 5 to 6 पीपल. रिझन बिंग की जर का मी त्याच्यापेक्षा जास्त लोक घ्यायचा प्रयत्न केला ना, त्या ऑपरेटर्सना प्रॉपर ऑन हँड ट्रेनिंग मिळत नाही, बरोबर एक्सपिरियन्स मिळत नाही. मग काय होतं मार्केटमध्ये, मग परत ते चालू होतं की ह्याला हेच माहिती नाही, तेच माहिती नाही. म्हणून आम्ही रिस्ट्रिक्ट केलंय स्वतःला की नाही 5-6च्या वर नाही घ्यायचं. पण पण येस, वी आर ओपन फॉर दॅट. सुनील खोडकेशी तुम्ही टचमध्ये राहू शकता की शेड्यूल केव्हा केव्हा कुठल्या मशीनचं आहे. मोनली आमच्याकडे जे चालतात ते डाय कटर, फोल्डर ग्लुअर आणि आजच्या डेटला कॉर्रुगेशन मध्ये जे FFG मशीन म्हणून येतं, फ्लेक्सो फोल्डर ग्लुअर, त्या मशीनसाठी आता सध्याच्या डेटला बॅचेस आहेत अवेलेबल. सर, दुसरा प्रश्न की तुमचं मिनिमम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय आहे का या मुलांना तुमच्याकडे पाठवण्यासाठी? नॉर्मली आम्ही म्हणतो की ऍटलीस्ट तो 12th असला पाहिजे. म्हणजे त्याला इंग्लिश प्रॉपर वाचता आलं पाहिजे. दॅट इज आवर कंडिशन. कारण आजच्या डेटला जे काही मशीन कंट्रोल्स आहेत, लँग्वेज अवेलेबल इज इंग्लिश.
सर मला थोडीशी सूचना अशी करावीशी वाटते की जी ड्रॉपआउट मुलं जी आहेत, कारण हा सगळीकडे आपण बघितलं की IIT ला जायचं तर 10वी पास पाहिजे, 12वी पास पाहिजे, पण प्रॉब्लेम असा येतो त्यामुळे की तसं बघायला गेलं तर आमच्याकडे जे आता प्रिंटिंग मशीनवरती ऑपरेटर काम करतात, नॉट नेसेसरी दे आर ग्रॅज्युएटेड ऑर दे आर एज्युकेटेड, बट स्टील दे आर ऑपरेट द मशीन लाईक हेडलबर्ग अँड ऑल. तर माझं असं म्हणणं आहे की ही थोडीशी शिक्षणाची अट, ज्याला काम करायचंय ना तर त्याला शिकवणं हे जास्त महत्वाचं आहे, त्याचं तो शिकतो. शेवटी कमांड्स आहेत, जरी इंग्लिश असलं तरी बटन कुठलं आपण काय होतं त्याला समजू शकतो. तर मला असं वाटतं की तुम्ही थोडंसं लिबरल राहा, म्हणजे बराचसा जो ड्रॉपआउट जी मुलं शाळेत जातच नाहीत 9वी 10वी, हा फार मोठा एक सोशल प्रॉब्लेम सगळीकडे. आता पंजाब गव्हर्नमेंटमध्ये मला असं आठवतं की त्यांनी असे शिक्षण संस्था चालू केले की जिथे हा विषयच नाही. तुला शिकायचं ना मशीनवरती, तू शिक्षण हा विषयच नाही, तू ये आणि शिक. तर असं आपण एक शिक्षणाची अट जर का कमी केली तर मला वाटतं या क्षेत्रात जास्त मुलं येऊ शकतात. नाही अशी माझी रिक्वेस्ट आहे, नाही म्हणजे युअर दोन पॉलिसी. मिनिट नाही आम्ही हे ऑलरेडी कन्सिडर करतो. आम्ही फक्त एवढंच बघतो की देन त्या मुलाला आम्ही थोडासा इंटरव्ह्यू घेतो आणि त्याचं इंटेन्शन बघतो आम्ही की त्याला खरंच ग्रो व्हायचं इंटेन्शन आहे का. कारण आमच्या स्कूलमध्ये आता आम्ही जसं म्हटलं की गेले ऑलमोस्ट 8-10 वर्ष आम्ही चालू आहे. बरेचसे ऑपरेटर असे आहेत की ते फक्त हार्डली 3री-4थी केलेले आहेत, पण त्यांच्या मनामध्ये इच्छा आहे की देअर इंटेन्शन इज देअर की मला काही आय वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आय वॉन्ट टू ग्रो इन माय लाईफ. इनोव्हेशन आपण जे म्हणतो ना की थिंक आउट ऑफ बॉक्स, की एक गोष्ट चालू आहे ती तशीच चालू ठेवायची आहे का दुसऱ्या मार्ग विचार करून ती वाढवायची आहे, ही जी इच्छा दिसते आम्हाला, वी ऑलवेज सपोर्ट दॅट काइंड ऑफ थिंग. आणि आम्ही हे पण सांगतो की की ऑल्दो ह्याच्यासाठी फीज आहेत वगैरे, पण कन्सिडरिंग द बॅकवर्ड सिच्युएशन्स अँड एव्हरीथिंग आम्ही त्याच्यामध्ये हे पण देतो, स्कॉलरशिप्स वगैरे देऊन पण करतो. फॅन्टास्टिक. त्याशिवाय आम्ही काही ओन्ली लेडीज बॅचेस पण चालवल्या, की आम्ही ट्राइब्समधनं वगैरे म्हणजे गुजरातमधनं वगैरे ट्राइब्समधनं वगैरे मुली आल्या होत्या. त्यांना त्यांचं त्या तिथल्या शाळेत होत्या. त्या म्हणल्या की आम्हाला शिकायचं आहे मशीन. सो इव्हन गिव्हन ट्रेनिंग फॉर दॅट ऑल्सो. सो वी आर ओपन फॉर ऑल. आम्ही काय बघतो फक्त इंटेन्शन बघतो त्या मुलाचा कितपत त्याला किती पुढे जायची इच्छा आहे. टाइमपास नाही व्हायला पाहिजे. शॉर्ट नाव. मॅडम मॅडमला एक प्रश्न आहे, प्रिंटेड मॅडम. आज बरेच जण आपल्याकडे इचलकरंजी किंवा पुण्यात सुद्धा आम्ही सगळे जे आहोत, तर प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आम्हाला समजता अशातला काही भाग नाहीये. तर आप हमें उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ शॉर्टली बताएंगे कि प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्या है और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम हो जाएगा और दे मे बी गेट मोर इंटरेस्ट इन टू दैट. प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड पता है, हम बात करें प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, डजंट मीन आई नो इट. और मुझे शर्म भी आती है आपको पूछने सबके सामने कि मैं कैसे पूछूं. मुझे आता नहीं बताने के लिए आज की तारीख में बहुत बुरा लगता है ना. बट देयर आर पीपल हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या है. आई कैनॉट आस्क इन द क्राउड. मुझे ये नहीं है, डेयरिंग नहीं कि आपके समय बात करूं, लेकिन ये बात सबके मन में है, उनको समझना है. तो आप थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू. सर प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया कि इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ नहीं समझा है करके, क्योंकि बिफोर 10 years व्हेन वी विजिटेड बर्लिन प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन, वहाँ पे कुछ मास्टर क्लासेस थे, तो हमें ऐसे लगा कि ये तो हमें कुछ नहीं आता है, ये कुछ समझता ही नहीं है. लेकिन नेक्स्ट ईयर व्हेन वी गो अगेन फॉर डिफरेंट एग्जीबिशन, लिटिल बिट वी अंडरस्टैंड कि ये क्या है, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, वो कैसे प्रिंट करते हैं, उसके लिए कौन सी इंक यूज की जाती है, उसका मेथड क्या है. मैन पावर तो हमारे पास है, तो हम वो माइग्रेशन का तो बता दिया, लेकिन एक बिग चैलेंज ये है कि प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पहले एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या प्रिंट करना है. प्रिंटेड बैटरी प्रिंट करनी है, हीटर प्रिंट करने हैं, क्या करना है, या फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज यूज करने हैं, क्योंकि अभी सब कुछ फ्लेक्सिबल में आ रहा है. फ्लेक्सिबल में आता है तो सब कुछ फ्लेक्सिबल, इंक्स भी वैसे ही चाहिए, मेथड भी वैसा ही चाहिए. तो फंक्शनल इंक, जैसे कि बैटरी हमें प्रिंट करनी है तो उसके अलग इंक्स रहते हैं, वो हम एक सबस्ट्रेट पे, फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट पे प्रिंट करेंगे तो वो हो जाती है फ्लेक्सिबल बैटरी. हीटर के लिए भी वैसा ही है सर. हीटर का तो इतना डिफरेंट एप्लीकेशन है कि मेडिसिन के साथ सोल्जर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं जैकेट्स के अंदर. इतने सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं हीटर्स के. प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट के ऊपर प्रिंटिंग इंक्स प्रिंट करना है, फंक्शनल और इलेक्ट्रॉनिक्स अचीव करना है. I would उसके suggest that they have a stand here. आप
वहां से आप जरूर थोड़ा शुरू सा करें। वहां पे देखेंगे ना तो आपको एप्लीकेशन भी दिखाई देगा, और आपके पास कुछ टाइम भी है तो आप फैसिलिटी में भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की पूना बेस्ट फैसिलिटी है कोथरूड में, तो वहां पर भी आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने लाइव प्रोजेक्ट भी किए हैं, यहाँ हम इतना सारा मटेरियल नहीं लेके आए हैं, छोटा टेबल है करके। थैंक यू मैडम। So I think, guys, I will finish it off because Sir is busy. Can you take it offline? I think we are. I am a chartered accountant and a doctorate. Sir, you have nicely, all the panel speakers have nicely narrated your success stories, starting from raw material, process management, even some financial part also. My son is looking after the print unit, and I am the observer. One of the problem faced by almost all print industries, working capital management. They're not able to manage, and they become a vicious financial circle. Reason number one, raw material itself cost about 65% of the sale value. Sir, can you just ask the question? We want to No, get to the I'm question. giving this suggestion. No problem. I'm supplementing it rather than asking a question. I'm in the line of a chartered accountancy profession for last 50 years. Sir Today, is a PhD in chartered accountancy. He is called as Dr. Zavre, Shivaji Zavre, and he has teached or taught, or his students, 10,000 students as CA are in the industry. So whatever he is, the question that he is asking is probably to that particular context. So you please go ahead, sir. no problem. I'm just and recently I have set up a new unit completely with modern facilities under the technical guidance of Mr. Nitin Wani. So I was just talking about working capital management has to be very, very effective for the success story of a print unit. And for that purpose, little bit I am free now. I can give the training as far as working capital management is concerned to the press association, because I am a teacher for the last 50 years and I'm in the print industry also. So that was a suggestion. So we can deliberate and we can talk one to one, sir. I think that session is most needed. Thank you, Zavre sir. I am a proud student of Zavre. When I was trying to unsuccessful attempt to do my company secretary, I used to go to his classes, and really many students are benefited by his untiring efforts for last 50 years. I mean, sir, hats off to him, and we are proud. He's a printer. Basically, they got a printing press in Sangamner. It is not that he started now. His father has got a press in Sangamner. So he's a printer, and then he joined chartered accountancy, and now again he's in our profession, sir. Thank you very much, and we'll definitely be associated with you. Thanks a lot. Can I wrap up? So first of all, जैसे कि मैंने आपको बोला था that इस पैनल से आपने सबने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, ये बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। मेरा आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बदलाव का वक्त आ गया है। घर पे बैठ के, फैक्ट्री में बैठ के हम बाहर की जंग नहीं जीत सकते। अगर आप लोगों ने कुछ भी आज सीखा है तो प्लीज मेरे लिए दो काम कीजिए। पहला काम, अपने आप से वादा कीजिए कि आप पैमेक्स में आएंगे, और दूसरा काम, खड़े होकर इन सबके लिए ताली मारिए। Thank you very much, all the panelists, for a session filled with technical information while freely discussing pros and cons. See, the program is yet not finished, so please take your seats. I know that probably people would be needing a break, but we are not too far away from the break. So we will quickly finish the two presentations by the sponsors, and we can freely break. Then we can take the free break, and we can continue with whatever the things that needs to be completed.
So thank you very much, panelists, for your energetic participation and showing us the path forward, how to adapt the conversions in print. So now the next, we will move on to a next session, which is a presentation by the sponsors. First to present is Sriyut Mohan Pailwanji, Vice President Winsac India, the global brand for and leading supplier of print packaging and brand protection solutions in India, Asia, Africa, and Middle East countries. Sriyut Mohanji is a mechanical engineer having spent 25 years of his career in the print industry and having served in India and Dubai. Mohanji will briefly explore the opportunities associated with connected packaging. See, this is again a printed electronic subject, so which is connected packaging, while exploring the applications, technologies associated with it, and the deployment support provided by his company for adopting of technology. Welcome, Sriyut Mohanji. Please.
entries is 18th of January 2023. https naep.opaindia.in ये वेबसाइट पे आप विजिट करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, so that you know like which category you fall in and kind of all these things. So all those information is available on this website. In between, now I would like to invite Mr. Redekar for announcing briefly the function that is happening in the college, the exhibition that is happening in the college. So I would request you to please come here on the dais and announce what you are planning to do in the college. So this is a part of the Industry College Association. So thank you, All India Federation and PPOA, for giving this opportunity to college, to my college rather. Thank you. थँक्यू नितीन. नमस्कार. पहिल्यांदा मी सर्वांना धन्यवाद देतो ऑर्गनायझर्सना की आम्हाला पुणे विद्यार्थी गृहांना इथं बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. मगाशी वेगवेगळ्या विषयांवरती चर्चा झाली, त्यामध्ये आत्ता सुद्धा ज्या वेळेला प्रेझेंटेशन केलं त्यावेळेला सांगितलं गेलं की आपले मुलं सुद्धा ह्या फील्डमध्ये येत नाहीयेत. ही एक शोकांतिका आहे खरं म्हणलं तर. पुणे विद्यार्थीगृह ही 113 वर्षाची संस्था आहे, काहींना माहिती असेल त्या संदर्भामध्ये. आणि प्रिंटिंग एज्युकेशनमध्ये आम्ही पायनियर आहोत. 1926 पासून प्रिंटिंगचे जे काही कोर्सेस आहेत ते इथं रन केले जातात. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये एक प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट आहे की विद्यार्थी संख्या जी आहे ती प्रिंटिंगकडे येण्याची संख्या खूप कमी झालेली आहे. अगदी मागच्या वर्षी आणि त्याच्या मागच्या वर्षीचा जर रिव्ह्यू घेतला तर इंजिनिअरिंगला येणारे जे विद्यार्थी आहेत तर 60चा आमचा इंटेक असून सुद्धा त्याच्यामध्ये 10 किंवा 12 विद्यार्थी तिथे एनरोल होतात. आणि पॉलिटेक्निकच्या बाबतीत जर बघितलं तर तिथं सुद्धा बऱ्यापैकी विद्यार्थी संख्या कमी येते. आपण वेगवेगळे रोड शोज घेतो किंवा बाकीच्या गोष्टी यावरती आपण चर्चा करतोय, परंतु हे कोणासाठी शक्य आहे तर आता ह्या फील्डमध्ये उपलब्ध असलेले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट असतील किंवा बाकीचे प्रिंटर्स असतील त्यांच्यासाठी योग्य आहे. पण आपण हा पण विचार केला पाहिजे की नेक्स्ट जनरेशन कोण असणार आहे आणि या फील्डमध्ये येणारे कोण आहेत याकडे सुद्धा थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर मला असं वाटतं की ज्या फील्डमध्ये यांना यायचं आहे असे 9वी-10वी पासूनचे जे विद्यार्थी असतील तर त्यांना हे अवेअरनेस आला पाहिजे की ही प्रिंटिंग सारखी एखादी ब्रांच आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण इथं जाऊ शकतो. तर या पद्धतीने जर करायचं झालं तर मला असं वाटतं की आपल्या सर्वांकडनं आम्हाला पार्टिसिपेशन आवश्यक आहे की जेणेकरून ग्राउंड लेवलला जाऊन ग्रामीण भागामध्ये जाऊन सुद्धा त्या पर्टिक्युलर विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे की हे प्रिंटिंगचं क्षेत्र आहे आणि त्याला व्हॅल्यू आहे 100%. तर या पद्धतीने विद्यार्थी संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करायच्या दृष्टीने आपण एक विचार केलेला होता आणि पुणे विद्यार्थी गृहाने थोडासा इनिशिएटिव्ह घेऊन यावर्षी आपल्या पुण्यासारख्या ठिकाणी जसं आपण मुंबईला पामेक्स भरवलं जातं त्या पद्धतीने पुण्यासारख्या ठिकाणी मध्यवर्ती ठिकाणी पुणे विद्यार्थी गृहाच्या लोकेशनला एक एक्झिबिशन भरवावं अशी एक आमची संस्थेची इच्छा होती. त्या पद्धतीने 27 जानेवारीला एक 2 किंवा 3 दिवसाचं एक्झिबिशन भरवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि त्याच्या निमित्ताने आम्ही थोडीशी प्रयत्न म्हणजे चाचपणी सुरू केलेली आहे. तर मला असं वाटतं की इंडस्ट्रीने त्याला सपोर्ट केला तर मला असं वाटतं की हे सक्सेसफुल होऊ शकेल आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी त्याला जरा एक्सपोजर मिळेल. आपली संस्थेची जी जागा आहे साधारण 3.5 एकरचं ग्राउंड आहे आणि पार्किंगचाही प्रश्न तिथं नाही आहे. तर या पद्धतीने आम्ही हे ऑर्गनाईज करायचा प्रयत्न करतोय. मला असं वाटतं की पुणा प्रेस ओनर्स असोसिएशन आणि मास्टर प्रिंटर्स असोसिएशन मुंबई यांनी सुद्धा यामध्ये आम्हाला तर भरीव असा भरघोस पाठिंबा दिला तर हे शक्य आहे. आणि त्यासाठी मी सगळ्यांना विनंती करतो की ह्या एक्झिबिशनसाठी कॉन्फरन्ससाठी आपण सर्वांनी पार्टिसिपेट व्हावं अशी संस्थेच्या वतीने विनंती करतो. आपला फार वेळ घेत नाही आणि मला असं वाटतं की हे सगळेजण टेक्निकल सेशन्स जसे आता आपण ऑर्गनाईज केले त्या पद्धतीचे सुद्धा आपण तिथं करू शकतो. 475 कॅपॅसिटीचा ऑडिटोरियम आहे. हे संस्था त्या पद्धतीने आपले त्याच्यासाठी उत्सुक आहे आणि हे सगळं योगदान द्यायला तयार आहे. माझी सर्वांना एक विनंती आहे की सर्वांनी इथं पार्टिसिपेट करावं. या ऑर्गनायझेशनसाठी किंवा जो काही आपण इव्हेंट ठरवलेला आहे त्यासाठी चंद्रकांत दादा पाटील जे
मिनिस्टर आहेत हायर एज्युकेशनचे, तेही येण्याचं त्यांनी कबूल केलेलं आहे. तर माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे सर्वांनी इथं संस्थेमध्ये होणाऱ्या इव्हेंटसाठी चांगल्या पद्धतीने भरघोस पाठिंबा द्यावा. धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्हाला काही बोलायचं सर? सरांनी आता आव्हान केलं त्याप्रमाणे प्रिंटिंग इंडस्ट्रीसाठी सर तुम्हाला जी काय मदत लागेल तर असोसिएशन लेवलला, ऑल इंडिया लेवलला आम्ही तुम्हाला सगळे मदत करायला तयार आहोत. आणि तुम्ही आता जे सांगितलं की विद्यार्थ्यांची संख्या खूप कमी होती, तर ही वस्तुस्थिती आपल्याकडेच नाही आहे तर इंटरनॅशनल लेवल पण वस्तुस्थिती आहे. मागच्या महिन्यात मी लंडनला गेलो होतो, तर ब्रिटिश प्रिंटिंग इंडस्ट्रीची जी त्यांची संस्था आहे तिथे चार्ल्स जेरॉल्ड नावाच्या सीईओला मी भेटलो. त्यांनी हेच सांगितलं की आमच्याकडे मुलांचं इंटेक खूप कमी होत चाललेलं आहे. सो मला असं वाटतं की आपल्या व्यवसायाचे ग्लोरिफिकेशन किंवा मुलांना करिअरच्या काय संधी आहेत ह्याचं आपण काहीच प्रेझेंटेशन करत नाही ना. कुठंतरी सगळ्यांनी एकत्र येऊन या व्यवसायामध्ये किती मोठ्या संधी, सर आपण म्हणतो जगातली 2 नंबरची इंडस्ट्री आहे, कोणाला माहिती आहे? आपल्याला फक्त माहिती आहे. पण ही गोष्ट मुलांपर्यंत पोहोचवायला गेली पाहिजे, त्यांना सांगितलं गेलं पाहिजे की याच्यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणाचं करिअर चान्सेस त्यांना अवेलेबल आहेत. तर मला असं वाटतं की कुठेतरी भारतातल्या सर्व संघटना, सर्व एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट एकत्र प्लॅटफॉर्मवरती येऊन ह्याचं काय पद्धतीने मार्केटिंग करता येईल, काय पद्धतीने मुलांना सांगता येईल आपल्याला, ह्याची एक गरज आहे. आणि असं एक कॉमन प्रोग्राम आपण बनवला तर मला वाटतं की काय अवघड जाणार नाही. म्हणजे ह्या व्यवसायामध्ये संधी उपलब्ध आहेत, या व्यवसायात पैसा मिळतो. आम्ही घरी जाऊन काय सांगतो मुलांना की एवढा प्रॉब्लेम आहे, मशीनचा प्रॉब्लेम आहे, पैसे येत नाही, मग मुलं कशाला धंदा येतील ना सर. वेन वी टॉक बी साइड ऑफ अवर बिझनेस एव्हरी डे इन फॅमिली टाईम, ते म्हणतात बाप असं करतोय तर आपण कशाला जायचं, आपण काहीतरी आयटी मध्ये जाऊन नोकरी करावी, जाऊ दे मोर धंदा नको. आमच्यातले किती पालक किंवा किती प्रिंटिंग प्रेसचे मालक त्यांच्या मुलांना प्रेसमध्ये घेऊन जातात. तू क्लासला गेलास का, तू अमुक केलंस का, बर्थडे एवढं विचार, पण प्रेसमध्ये आलास का असं कोणी विचारत नाही आणि त्याला कोणी घेऊन पण जात नाही. मुलांना जोपर्यंत तुम्ही प्रेसमध्ये घेऊन जात नाही, पुढच्या पिढीला त्यांना इंटरेस्ट निर्माण करत नाही, तोपर्यंत हे होणार नाही. आम्ही आमच्या व्यवसायात वाढत गेलो, लहान मुलांना कागदात खेळलो, मोठे झालो, आम्हाला व्यवसायाची गोडी राहिली. पण आमच्या मुलांना तेवढी गोडी आहे का? तर मी पण इन्व्हॉल्व आहे. मी असं कोणाला दोष देत नाही, पण आम्ही पालक म्हणून मुलांना आमच्या व्यवसायामध्ये आणण्यासाठी ज्या गोष्टी एनकरेज करायला करत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं की आजचा टेक असं असेल की आपण या सर्वांनी, हा खूप छान व्यवसाय आहे, आपण नशिबान आहोत, एका चांगल्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय, तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले तर फ्युचर खूप छान आहे. मगाशी मी सांगितलं, जागते रहो, छापते रहो. मला 2 शब्द याच्यावर बोलायचं आहे. आय मीन बिकॉज रवी बोलला, आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये वी हॅव टू इंट्रोड्यूस ग्लॅमर. जो ग्लॅमर डेड आहे ना, असं वाटतं की इट इज इट्स व्हेरी डेड. सो वी हॅव टू यूज ग्लॅमर अँड वी हॅव टू इन युअर कॉलेजेस अँड ऑल ग्लॅमर, वी हॅव टू ग्लॅमराइज द इंडस्ट्री. दॅट इज वन. बिकॉज टेक्निकली वी आर प्रॉब्ली द सेकंड मोस्ट टेक्निकल equipment, precision equipment after the aeronautics. We come in the second number, the precision in which printing is. So they have to be shown. Has a film बनवून, I don't know, some way, the glamour has to be seen. Because आजकालच्या मुलांना glamour पाहिजे, socializing करायचं, they have the times. And they are brilliant in the innovation. In fact, we need these minds. And if at least 5 or 10% of these kids come into the print line, I'm sure we'll be one of the best print countries in the world. Thank you so much. Yeah. And I believe just to continue this, print is a very creative line. त्याच्यामध्ये तुम्ही रोज नवीन नवीन काहीतरी नवीन नवीन काही करत असता. एकच जॉब तुम्ही जन्मभर आयुष्यभर छापू शकत नाही. So every time you are adding some new content, new dimension, new something or the other, and there is so much of an opportunity. Right from anything to everything, the print is required. So print is going to stay. So bring in your next generation in print, that is most important. आणि फॉर्च्युनेटली आज मी जे काही प्रिंटिंग मध्ये आलो, ज्यांच्यामुळे आलो ते माझे मामा पण आज इथे आहेत, उपस्थित आहेत. ही वॉज वर्किंग फॉर करन्सी नोट प्रेस. सो फक्त ते नोटाच छापत होते. इन रिअल सेन्स ही वॉज प्रिंटिंग द नोटा. तर ते पण आज इथे आहेत. सो आय एम व्हेरी ग्लॅड टू हॅव हिम ओव्हर हिअर अलॉंग विथ रेडेकर सर, who is the chairman of the institute from where I have passed out. So thank you very much. Now I request Mr. Tirtharaj Joshi to please present the vote of thanks. So we would not extend this particular program beyond certain limits. So I would request Tirtharaj ji to come on the dais and deliver the vote of thanks. Thank you. थँक्यू नितीनजी. मला माहिती आहे सगळ्यांना भूक लागलेली आहे,
पण सगळ्यात महत्वाचा कार्यक्रम असतो वोट ऑफ थँक्स, तो द्यायला मी इथे उभं राहिलेलो आहे आता. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक थँक टू AIFMP, President AIFMP Mr. Ravindra Joshi, HDS Raghavendra Datta Barua, VP West Anand Joshi, for giving an opportunity to PPOA for organizing roadshow for PAMEX 2023 in association with print packaging. I would like to thank all the association presidents and secretary in Maharashtra for supporting this event. Solapur Mudrak Sangha, Kolhapur Jilla Mudrak Sangha, the Pune District Master Printers Association, Printers Association Ichalkaranji, Bombay Master Printers Association, Mumbai Mudrak Sangha, Dombili Mudrak Sangha, Dombili Shahar Mudrak Sangha, Thane Jilla Mudrak Sangha, Printers Guild Nagpur, the Ahmednagar Press and Allied Owners Association, Latur Jilla Mudrak Sangha. सगळ्यांना जय महाराष्ट्र. The theme for upcoming PAMEX 2023 is Convergence in Print. A panel of industry experts were invited to throw lights on theme Convergence in Print. A big thanks to them. Shri Vijay Nalavade, Shri Rajesh Kulkarni, sorry, on behalf of him, Deepa Shah Madam, Shri Saurin Shah, Shri Sachin Patil, and Shri Pavandip Sahani. Thanks to all panelists. Thanks to the sponsors, Shri Mohan Pailwan and Pavandip Sahani ji, for giving a wonderful presentation. Also, thanks to all the exhibitors who participated in today's tabletop exhibition. A very big thanks to the audience for overwhelming response. I would like to thank all of you for patiently attending the conference and enthusiastically interacting with everyone about emerging trends in printing. Thanks to the staff of Hotel President who helped us to make this event successful. I would also like to thank my team PPOA and team Print Packaging and co-chairman Tushar Dhoteji. And last but not the least, thank you so much Nitinji, our today's MC, for conducting the conference flawlessly. See you all at PAMEX 2023. Good day. Thank you very much. सगळ्यांना जेवणाची सोय आपण पलीकडच्या हॉलमध्ये केलेली आहे, तर सगळ्यांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यावा. खाली आहे, खाली आहे, सॉरी, खालच्या हॉलमध्ये आहे. So I declare this program as over. So thank you very much for attending the program, and don't forget to give the feedback and also send your entries to NAP award. Anil ji, yeah, exhibition is open. You have given a promise to Pavandip ji to visit the exhibition. So post lunch you will visit the exhibition.